सीधा होके बैठ गया है। मुझे तो टॉपिक भी नहीं पता। टॉपिक कुछ नहीं है भाई। टॉपिक सिर्फ ये है कि लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स गेट बैक ऑन टू द बस बेसिकली, जो कि हमने बहुत अरसे से छोड़ी हुई थी। लेकिन बेसिकली क्या हुआ था कि ये मुस्तफ़ा भाई थोड़ा सा जागे थे, उन्होंने थोड़ा एंगेज किया ग्रुप पे। मेरे ख्याल से पूरे वर्ल्ड कप में तुमने कुछ ज़्यादा बोला नहीं है। सुन रहा था सबकी। आप वो बना रहे थे ना, ग्रेविटी बना रहे थे ना तुम पीछे से। हाँ वो बिजी था उसमें, बन गई ना। अब मैंने कहा अब जरा कमेंट कर। सही सही, उसका काम सही से हुआ है ना, कोई मसला तो नहीं होगा ना? नहीं, हर पोजा बिल्कुल सही जगह ओके की रिपोर्ट है। ओके की काम भी रिपोर्ट। बहुत टॉपिक होता है आजकल मुस्तफा को काम भी बहुत होता है। आजकल बहुत काम है। हाँ, टॉपिंग्स क्या कहते हैं? टॉपिंग्स क्या थी, क्या फर्क? टॉपिंग्स टाइट और सॉस वीआईपी। सॉस टॉपिंग टाइट सॉस। टॉपिंग टाइट सॉस वीआईपी मुस्तफा भाई। ओह ऐसी वैसी आपको जब आएगी ना तो फिर देखिएगा आप। भाई तू नादर अली की वीडियोस देख ले भाई, पिज्जा वाली, तुझे पता चलेगा कौन सी टॉपिक्स कहाँ पर है। सार भाई की पता नहीं क्यों तपती है इस नादिर अली से। I don't like that guy. No, I don't like him either, but I like his content. I don't have to like मेरे को I don't have रिश्ता to तो नहीं like the डालना ना। person. I don't have to like the person. रिश्ता थोड़ी देना है मुझे उसका। मुझे भी नहीं पसंद जिस तरह वो अपने पॉडकास्ट करता है, उसमें सवाल जवाब करता है लोगों से। पॉडकास्ट वाला उसका जो हाँ। मीडियम है ना, वो तो बहुत ही अब बेकार है। उसने सवाल पूछे थे उससे सुनीता मार्शल से, और वो सारी जो कंट्रोवर्सी थी, वो तो सही सवाल है। You don't have to like the person. वैसे जनरली भी उसके पॉडकास्ट टेम्पलेट समझ नहीं आता, यानी कोई रिसर्च नहीं होती, बस सामने कोई भी बैठा हो बस कुछ भी बोल देगा। यार वो सर आपने इतना पैसा कमाया है, जरा बता दें आपकी इनकम कितनी है। लेकिन उसकी बात भी माननी पड़ेगी कि है, वैसे ये उसका प्रॉब्लम है। उसको सबसे इनकम मालूम करनी है, उसको सबको पता करना है कौन कितने बना रहा है, ये है आज ऐसे। कितने बना रहा है, तब कितने बनाए हैं। वो 20 साल पुराना भी कोई रिटायर्ड बंदा आ जाए ना, उससे भी पूछते हैं सर उस टाइम पे बताएं कितने मिलते हैं। उस टाइम पे कितना था, और फिर दिमाग में कैलकुलेशन पूरी होती है कि यार अभी पूरी तक मैथ करके इन्फ्लेशन लगा के फिक्स्ड डिपॉजिट में रखे होंगे, प्लॉट लिए होंगे, डिफेंस के चार्ज के कितने बन गए होंगे। वो वैसे क्लासिक पता नहीं है कोई गाड़ी कौन सी रखी हुई है, गाड़ी को वैसे एक डेफिनेशन अपना एक इस तरह के लोगों की। लेकिन मैं क्या कहते हैं कि इस तरह के एक यूजली जिस तरह के लोग होते हैं उनमें उनकी डिटेल्स में जाए बगैर, यानी कि आपको होता है नया पैसा की डेफिनेशन क्या होती है। ओह यस तो एब्सोल्युटली, ही फिट्स द बिल, यानी कि विदाउट साउंडिंग too rude, but that's what it is. I mean, इसमें कोई बुराई नहीं है, नया पैसा होता है। नहीं नया पैसा नया होता है, लेकिन नजर भी आ जाता है कि नया। वो आपने बहुत मशहूर बात नहीं सुनी कावस जी की कि Nawaz Sharif visited his house in Karachi and he wanted him to join his cabinet as a minister or whatever, right? And then मियां साहब कहते हैं to कावसी आपका घर बहुत पुराना है। तो वो कहते हैं, you know, in his very fond way of talking, right? It's a very funny way of talking. He said क्योंकि हम पुराना अमीर है। ओल्ड क्लिफ्टन का घर यार, I mean obviously 100 करोड़ के उस टाइम पे करते हो। पता नहीं उसका बिजनेस क्या था वैसे। यार शिपिंग भाई 70s से पहले शिपिंग, उसके बाद नेशनलाइजेशन हो गई, उसके बाद तो फिर I mean obviously फिर तो वो सिंबॉलिक रह गया ना। But I'm sure the guy had some side gigs going on. ऐसे तो नहीं कि मैं आर्टिकल्स देखता था वो। He had more ships back in the 70s before the nationalization happened than Pakistan's national carrier today, basically. He was that rich. ना ये तो है। So तो very rich. उसके आर्टिकल्स बड़े अंत होते थे यार, वो मैं और पढ़ता फिर था। जनरेशनल वेल्थ भी है ना। देखो वो जो पार्टी है, हाँ जद्दी पुश्ती खर्च उन्होंने करना नहीं है यार वो। हाँ वैसे बड़े रहने सहने के मामले में वो ज्यादा एलैबोरेट नहीं थे। बहुत सिंपल लोग होते हैं। स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी, जिस तरह मेमन होता है बेसिकली कि वो आपको इतना लेविश दिखेंगे नहीं, यानी कि बाइकों में फिर रहे होंगे चप्पल पहन के। हाँ अब तो खैर नहीं अब तो अलग ही सीन चल रहा है। कुछ है लेकिन जो प्रॉपर यानी कि समझ लो कि जिनको काम है कि पैसे कमाना। बोल्टन मार्केट वाले हाँ वो प्राउडली जा रहे होते हैं। हाँ वो उसमें बैठते हैं, लेकिन अरबों उनके जेब में पैसा होता है। कैंची चप्पल पहन के जा रहा है। वैसे अरबों पैसों से याद आया कि आप लोगों को मुबारक हो, एक अरबपति हमारा कैप्टन बन चुका है टीम का। तो उसी के ऊपर ये समझ लें कि डिस्कशन किक ऑफ हुई थी
जिसमें मुस्तफा भाई ने बोला था कि भाई हम एक वेल ग्रूम्ड और एक ना एक पढ़ा लिखा एक सुलझा हुआ कैप्टन. By the way, मुझे I have no issues with Shan Masood as a person. I actually like the guy, right? मुझे No, कोई I प्रॉब्लम mean, नहीं but है it's उसमें. not about liking the guy. It's about हाँ. what Same thing. I don't like Nazir Ali, but I don't to like his content also. हाँ. No, That's but something I you like like. the guy. No, I like the guy. But I actually like even him being in the team is not a concern to me, honestly. If he was like included, I would be like, okay, fine, whatever, right? But the I mean, thing if you is, put Abdullah and the way Imam plays and all of that, I mean, इसकी तो जगह भी नहीं बनती है. आपने टुक टुक हाँ, करके अगर बैटिंग करानी है लोगों से, we have a lot of those people, right? I mean, Abdullah Shafiq, I don't think nobody would deny के उसकी जगह नहीं बनती टीम में, right? उसकी जगह बनती है. हाँ. And then who's your second opener, right? I mean, I'm pretty sure Imam's technically way better than Sean. वैसे So, आबिद की कब अपडेट है किसी को? nahi, I think he's still recovering. So, अभी तक उसकी कोई वो नहीं हुई ना. nahi. लेकिन यार अब एक तो वो मुझे वहाब रियाज का वो स्टेटमेंट में सुन रहा था, उसने जो टीम अनाउंस करी है अबाउट आई थिंक हारिस रऊफ. Huh. That in itself alone shows you the caliber of the guy कि like number one हारिस रूफ की कोई जगह बनती नहीं है वैसे टेस्ट में, और वो हाँ, ऐसे तो उसको बेच रहा है basically, कि एज इफ तो के ये कि दो हारिस रूफ साहब ने मना कर दिया हमें तो ये टेस्ट में. ओ भाई. बहुत ही कॉन्ट्रडिक्टिंग, वैसे भी समझ लो आइडियोलॉजीज का टकराव है एक तरह से, राइट? हाँ, द वे योर चीफ सिलेक्टर इज एक्टिंग, नंबर वन, एंड देन एक्चुअली इफ यू टेक अ स्टेप बैक, द पॉइंट दैट दे वर एक्चुअली गोइंग टू हैव, सो टू योर पॉइंट, राइट? A person who doesn't play 4-day at all to come and play for your test team. So you're going as PCB begging a person who doesn't play 4-day to say come play for us, and then that person's like uski the audacity, right? And he's हाँ. like, no, I have this issue and whatever, like मतलब तुझे आई ये थिंक उसने तू ये बोल के एक्सक्यूज कर ले कि भाई मैं खेलता ही नहीं हूँ 4-day, ठीक है? उसने I'm sure फिटनेस या जो भी किया है, and then Wahab Riaz turning around and trying to throwing. even his last sentence was कि this will hurt Pakistan basically, and I Oh, mean and come and on, so man. rich coming from the guy who Yeah, actually sure. on his watch 17 साल Naseem Shah and Musa Khan had to make a debut in Australia in our last trip, which Yeah. was I think 4 years ago or what it was. और उसमें जो उनके साथ हुआ है everyone remembers कि 400 I mean, रन की he's very पार्टनरशिप. lucky. I mean, people have forgotten, but he's very lucky. जो आमिर वाला scandal हुआ था, ठीक है? उसमें I mean, there was that video where he's exchanging jackets with the guy and all that. You remember ओ that, ये right? हाँ पे हाँ उसकी बचत हो गई थी कहने को. कन्नों कन्नों से गन्नों बचा से है बचा यार. था. हाँ. चौड़ापन देखे. इसकी देखो, इसकी कोई ना कोई पर्ची जरूर है, ठीक है? पहले पंजाब का स्पोर्ट्स मिनिस्टर बना वाइल्ड प्लेइंग, ठीक है? हाँ. अब देखो ना, लोग रगड़ते हैं अपनी एड़ियां इस तरह की पोजीशंस के लिए, ठीक है? राइट. How did he end up becoming the chief selector that quickly? Doesn't पानी make sense, right? पानी भी मारता है लोगों को गाड़ी पे गाड़ी चलाता. सोचो यार. पहले पंजाब का स्पोर्ट्स मिनिस्टर इसको बनाया, पता नहीं क्या पर्ची है इसकी, ठीक है? नाउ दिस. वैसे मैं मुझे तो लगता है कि या तो कोई एचएसओनियन कनेक्शन है. He is HS ex HSN, which I really find it very hard to Uh-huh. believe. Yes, me too. he I is. was very shocked. तुमने जो बताया था I was like what? It is No, shocking. Yes, he is from HSN. That's true. that's the. I mean, I'm thinking HSN has hit a new low. But who's the HSonian connection? Like Ramiz Raja would कोई have भी हो been. सकता है, कोई भी हो सकता है. फिर तो like I mean, you don't know who the movers and shakers are anyways, right? So कोई भी हो सकता है. But that it has to be an HSN connection. If not, then I don't know. Yeah. अच्छा But खैर उसपे तो वो करते हैं बात. वैसे क्या क्यों क्या था? Sir, you were saying something? no, I'm just gonna say like let's start off with the discussion. हाँ. तो मैं वही स्टार्ट करने वाला था कि वैसे मुस्तफा हैज बीन वेरी क्वाइट. हालांकि किक ऑफ उसने किया था. मुस्तफा भी आप बताएं. मुस्तफा अभी देव आनंद वाले रूप में फुल बैठे हुए हैं. आप चेक हाँ. करें, ये टोपी जो है ना, ये पीकी बहुत बलोच मैंने बोल चुका ना. पीके बलोच पीकी है. बलोच. पीकी बलोच इज इवन हाँ. बेटर. चलो. हाँ ठीक कर देना चाहिए. नहीं, ये डिस्कशन तो इसी चीज से किक ऑफ हुआ था कि who should be the captain, right? अगर हम अवेलेबल लॉट में देखें कैप्टनसी, पहले तो टेक अ स्टेप बैक, राइट? आई थिंक कैप्टनसी इज अ वेरी ब्रॉडर रोल. It's not just purely about scoring runs and performing. It's a combination of that and just the overall personality of the person, leadership qualities, communication. I think plays a very important role. I feel like कैप्टन जो है ना, सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मर नहीं होना चाहिए, उसके अंदर ये सारी क्वालिटीज होनी चाहिए. एंड करंट लॉट में अगर आप देखो तो शान मसूद फिट्स दैट डिस्क्रिप्शन, स्पेशली इन टेस्ट मैचेस. अगर आप रिकॉर्ड्स की भी बात करें तो शान मसूद डजंट हैव बैड रिकॉर्ड्स इन टेस्ट एट ऑल. रीसेंट अगर आप उसकी परफॉर्मेंस देखें, खासतौर पे फर्स्ट क्लास क्रिकेट, आई मीन
अगर आप ओवरऑल इन एनालिस्ट्स को सुने, इनका एक ही ग्रीवेंस होता है कि यार हमारी जो पाकिस्तान का जो डोमेस्टिक क्रिकेट सर्किट है उसकी परफॉर्मेंसेस को इनकॉर्पोरेट करके उन लोगों को क्यों नहीं लाया जाता, राइट? तो आई थिंक ये जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है इसमें आई थिंक दे हैव डन दैट बाय गिविंग अपॉर्चुनिटीज टू इंडिविजुअल्स जिन्होंने लोकल सर्किट में परफॉर्म किया, एज अगेंस्ट वो लोग जो कि कहते हैं कि यार मैं लोकल में नहीं खेल सकता, मुझे बाहर इंटरनेशनल खेलना है एंड ऑल, राइट? आई थिंक दे हैव डन अ प्रीटी गुड जॉब. So Shan Masood has consistently performed locally. He has been a captain in one of the county teams as well. I think Yorkshire में शायद यॉर्कशायर से खेलता है, हाँ। Yorkshire से I think Was he he playing has in the led Qaid that. Azam Trophy recently? जो अभी अभी तो पाकिस्तान का यार पूरा वो उसमें खेलता है, वो खेल रहा हमेशा है. से 4 But डे he खेलता है, is, yeah. इसमें कोई नहीं, शक अभी नहीं इससे पहले कंक्लूड हुई ना कायद आजम ट्रॉफी, अभी पाकिस्तान कप से पहले कंक्लूड हुई है ना वो। है। आई एम श्योर खेला I'm होगा, ऐसा नहीं हो pretty सकता sure कि खेला उसने होगा, हाँ, बनाया उसमें उन्होंने। खेला ऊपर होगा. गया था उसमें। हाँ, लेकिन अभी वाले में तो खेला है, इसमें तो बल्कि काफी अच्छा परफॉर्म भी किया है इसने. एंड देन T20s में भी आई थिंक ही इम्प्रूव्ड प्रीटी मच रिसेंटली. लाइक एक वक्त में तो ये बात भी आ रही थी कि भाई शान मसूद को T20 टीम में होना चाहिए. मुल्तान सुल्तान्स के लिए ही हैड प्रीटी गुड परफॉर्मेंसेस एज वेल. सो आई फील लाइक इन द दैट लास्ट आई फ्यू गिव इयर्स, हिम वैसे, हाँ, उसने जो या, अपने गेम को चेंज करके चेंज किया हाँ T20 को aggression अडाप्ट aggression किया आया. ना। आई थिंक आई पर्सनली फेल्ट व्हेन द वर्ल्ड कप स्क्वाड वाज अनाउंस्ड, हमने वैसे उस टाइम पे पॉडकास्ट नहीं किया, लेकिन अगर किया होता तो दो लोगों की इंक्लूजन की मैं जरूर बात करता हमारे वर्ल्ड कप की स्क्वाड में. वन वाज शान मसूद एंड द अदर वन वाज इमाद वसीम. Because Shan Masood literally he has transformed, like, you know, himself completely and has been scoring runs in the shorter format as well. So I mean, again, it would have, वो फिर एक नया डिस्कशन होता कि भाई किसको हटाते हैं and all of that, but the point is कि he has improved overall, and with that and all his leadership experiences, I mean, he debuted back in 2013. तो 10 साल हो गए, आई मीन इंटरनेशनल सर्किट में रहते हुए. आई थिंक दैट्स अ अब तो प्रीटी बनता है डिसेंट यार अमाउंट ऑफ उसका। एक्सपीरियंस. या बिल्कुल बनता है. आई थिंक ही इज अ डिसेंट चॉइस. आई मीन वो अब ऑस्ट्रेलिया सीरीज के बाद पता चलेगा ये क्या होता है. आई डेफिनेटली डोंट थिंक दैट्स अ गुड स्टार्ट. बट शाहीन को T20 साइड पे बनाया गया और शान को यहाँ पर बनाया गया. अगर मुझसे पूछा जाए ना, मैं पर्सनली कहूँगा आई थिंक शान वाज अ बेटर, डेफिनेटली इट्स अ गुड सिलेक्शन. Shaheen, I'm still doubtful. I'm not sure अबे how. भाई 2 PSL जीत I गया know, बंदा, I और know, but PSL is not the benchmark. यही मैं अबे यही हमारा बेंचमार्क तो PSL ही है ना यार। पाकिस्तान में बस वो T20 का बेंचमार्क T20 क्या है? पाकिस्तान की T20 performances have not been bad since the inception of the first, T20 event that was 2007 World Cup. Pakistan's हाँ, almost made it to the semi-final every time एवरी except टाइम। once. ठीक है? yes. So I think our T20 game is fine. It's the हाँ, other ones that have been a problem. लॉन्गर फॉर्मेट हैव 50 बीन 50 इश्यूज यार। 50 50 over और टेस्ट में, आई मीन T20 की ये अभी भी बहुत अच्छी टीम है. आप बाबर को दे दें, इवन अंडर सरफराज, राइट, जब सरफराज को हटाया, nobody was arguing कि उसको T20 की कैप्टनसी से हटाना चाहिए था. Everybody had issues with either 50 over or test matches or whatever, उसकी, right? हाँ, उसकी जगह का इशू था कि वो टीम में जगह कैसी बननी हाँ, है ये उसकी, भी एक किस नंबर प्रॉब्लम पे थी आएगा। उसमें. हाँ, So let's talk about Shan for a second, right? Hold on. नेशनल. Qaid-e-Azam Trophy happened, right? हाँ, Karachi versus Faisalabad was the final. Shan was playing Shan was playing for Karachi हाँ, हाँ, under Sarfaraz's captaincy. In the first innings, Shan made 50 plus change runs. Second हाँ, innings, he's made the winning runs of 180 runs. Shan Masood with a strike rate of almost 70 in a 4-day format. ठीक है? नाइस। पहली चीज ये, but his international record of test playing 30 matches altogether, his average is 28 international. Now you're talking, I mean, you can say local Asian wickets or you can take it as Australian wickets, but I'm just talking about overall. And his county stats is pretty bad as well. It's not, you can't say that it's like he has anything above 30 even in his average of in county. And he opens, right, for He's this side? open, but so he doesn't open. He's a one down. अच्छा, He's a one down. ठीक है? that's even more So bad. now if we sum those numbers up, fine, he's doing well in Qaid-e-Azam trophies. But if you take him international level and even outside of local domestic circuit, which is AKA county, he hasn't performed. So this is where, I mean, I just looked at the domestic circuit of this season, the final game. I didn't even see the whole, but The whole- his domestic average is 54. I think domestic, I don't think our domestic is a benchmark for anything. I mean, domestic में हमारे जब हसन अली ने भी कम बैक किया तो सेंचुरी मारी है, ठीक है,
So I don't know. I mean, Australia is going to be a different game altogether. The worst thing would be that they make him the captain and they get rid of him right after the series. ये होते हैं ना Yeah. बहुत short-lived captains होते हैं कुछ. Hmm. ठीक है? हाँ So I hope that's not the case. I hope देखिए not. होगा ऐसा. But नो आई थिंक if उसको his बोला है selection, उसको शायद बोला है कि एक सर्किट जो 20 जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का सर्किट चला है उसके एंड तक की कैप्टन है, व्हिच इज लाइक 2 years from now. so if so now coming back to the point in which the selection of Shan Masood, if its selection is based on Qaid-e-Azam Trophy performance, okay. But if his Fair. selection is based on overall his record, whether it's international cricket or county, I don't see any numbers that would say, okay, so he stands out, that, okay, he's the guy for the Pakistan cricket team. However, now coming back to Mustafa's point that he made, that captaincy is not only about performance. Captaincy is about person's personality, how he leads the team, how he thinks analytically, strategically, thinks, outside the box, 5 overs ahead of someone else. Like all those boxes check mark. हाँ Maybe हाँ Shan has it. I don't know, right? I don't know him personally. So it's देखो मेरा एक में इसमें एक सिंपल सा एक वो है कि क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये जितनी भी चॉपिंग एंड चेंजेस हैं, स्पेशली लाइक यू नो ब्रिंगिंग न्यू प्लेयर्स, कैप्टन्स एंड ऑल ऑफ दैट, ये उस चीज़ का इंडिकेटर है कि आप कुछ चीज़ फिक्स करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है? तो द रीजन व्हाई यू चेंज अ कैप्टन और यू चेंज bring new players in because you think कि previous players or previous captains didn't do the job, couldn't do the job, and this new lot will do it. मेरा मानना ये है कि the problem is never the captain with Pakistan. The problem is never the team or the players, क्योंकि हमारे पास लॉट इससे कोई और आसमान से तो नहीं उतरेगा, यही कुछ 36 प्लेयर हैं आई थिंक जो घूम फिर के आ रहे हैं हमारे पास. यानी कि आपके बॉलर जितने भी इंजर्ड हो जाए घूम फिर के हसन अली ही आ सकता है, और तो कोई ऑप्शन इस तरह का नहीं है कि हम कहें कि यार कोई हमारे पास लॉन्ग फॉर्मेट में बहुत बॉलर्स बन रहे हैं और हम हसन अली और ये बाकी लोगों की जगह रुक के बैठे, देयर इज नो चॉइस. यानी कि अगर हमने उसी दिन किस दिन बात करी थी कि हमारे जो फास्ट बॉलर्स जो सर्किट में भी कायदम ट्रॉफी में जो बॉल कर रहे हैं उनकी एवरेज एजेस इज 32-33. यंग फास्ट बॉलर्स आपको अभी ये मीर हमजा आई थिंक कितने एज है मीर हमजा की? मीर हमजा भी 30+ है एग्जैक्टली. और नहीं 30+. वो लगता नहीं है बहुत टाइम से अच्छा नहीं है खेल तो. He's never made it to the team इस तरह से ना. वो उसने डेब्यू किया था लेकिन he did well on the debut as well. I don't know उसको क्यों नहीं या रखा. 31, he's 31 absolutely Yeah, he's right. 30+, yeah. तो और दूसरा जो लड़का भी आया है वो नया है सिर्फ, क्या नाम है उसका यार, कौन आया है नया लड़का जो भी इंक्लूड हुआ टीम में? आदिल 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 नाम है उसका, क्या नाम था No idea. यार? अभी गया है हमजा के साथ, एक और है ना पाकिस्तान खैर स्क्वाड. टीम के अंदर एक नया लड़का जिसका मुझे सबसे बड़ा जो मुझे एक शॉक लगा है ना, वो सैम अयूब का है. उसको That's a big सीधा shock. डोमेस्टिक से निकाल के ऑस्ट्रेलिया भेज रहे. लेकिन वो कम से कम 4 डे खेला तो हुआ है. खेला हुआ है. नहीं, I understand that. What I'm saying शुक्र is करें that उसको डायरेक्ट T20 से नहीं निकाल के लाए. correct. What I'm trying to say is that guy, what I've heard, I haven't seen him play. I've heard he's a talent. He's a Amir great Jamal. talent. Very good player. He's a very good player. He's done fantastic in the whole Qaid-e-Azam Trophy 4-day games. He has done amazing job there. Now you're bringing a young kid and taking him straight to Australia, where of course the ball bouncing is completely I different. don't think he's gonna play. I don't think he's gonna play in the first team. वो हाँ वैसे भी वो किसकी जगह कुछ खेलेगा. हाँ उसकी जगह नहीं बनती. कैप्टन की जगह बनती है उसकी वैसे भी क्योंकि वो तो है ही ओपनर unless he wants to come one down. Shan, and which might not be the worst thing by the way, given हाँ. Shan will have so much pressure. I don't think he should open the innings. True. लेकिन but the point was कि मेरा मानना ये है, और आई थिंक फारूक ने भी इसकी तरफ इशारा किया था कि हमारी जो परफॉर्मेंसेस हैं इवन इन द लॉन्ग फॉर्मेट, अगर वाइट बॉल की बात करें, we've always been lacking in key situations. यानी कि आप उठा के देख लो 2019, ठीक है ना, वेस्ट इंडीज के साथ अनएक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस वेस्ट इंडीज कुत्ते की तरह हारे, ऑल बिकॉज ऑफ दैट वी कुडंट मेक इट टू द सेमीज. सही है. फिर इसके बाद आपका 2021 का वर्ल्ड कप दुबई में जो हुआ था, वर्ल्ड कप था जिसमें हम सेमीफाइनल में हारे. ऑस्ट्रेलिया से वो भी हसन अली ने सिंगल हैंडेडली में हराया. Exactly. और then so again ऐसी सिचुएशन थी कि जिसमें it could have gone either way and it obviously went against us, as it always happens in against Australia anyway. फिर उसके बाद हम एशिया कप का फाइनल हारे, ठीक है. नहीं है श्रीलंका इंग्लैंड में भी हम अल्लाह करके पहुंचे थे अपना जहाँ साहिर भाई गए थे ऑस्ट्रेलिया में हाँ अलग वो तो बाद में है ना. फिर वो वापस से 2022 हारे थे. हाँ 2022 में आए, फिर फाइनल तो पहुंचे, साहिर फिर भाई गए अगेन उन्होंने बात की तो फिर बात की, कुछ बात बना आगे से, लेकिन वरना वो भी नहीं हो रहा था. वो भी नहीं हो तो रहा था.
तो द पॉइंट इज कि अगर आप देखें एक ट्रेंड जो बना आ रहा है वो कोई, मुझे लगता है स्किल सेट की कोई कमी इस तरह से नहीं है कि हम बोलें कि बिल्कुल ही कुछ खेलना ही नहीं आता, क्योंकि आपको रिजल्ट्स तो मिल रहे हैं। अभी मैं कोई स्टैट्स पढ़ रहा था कि इन द लास्ट 10 years जो आईसीसी फाइनल्स एंड सेमीफाइनल्स हैं, we're neck and neck with इंडिया। यानी कि जितने सेमीफाइनल्स और फाइनल्स इंडिया ने प्ले किए हैं पिछले 10 साल के अंदर आईसीसी इवेंट्स में, उतने ही आसपास हमने किए हैं, और अपेरेंटली वी आर वर्स्ट ऑफ फॉर व्हाटएवर रीजन, I ठीक है। think the process though by which we get there versus how they get there, I think that's different. They get there very That's comprehensively. ठीक है? Exactly. They true, get by the हम merit. हम They हम win the games. कन्नों से Yep. पहुंचते हैं basically ट्रू बच ट्रू। बचा के। देखो, एक ये भी एक मुझे थोड़ा सा उसमें मैं उस चीज को चैलेंज करता हूँ, लोग जो कहते हैं ना कि यार ऐसी पहुंच गए लकीली, यार एट द एंड ऑफ द डे वी वन गेम्स, दैट्स व्हाई वी रीच। अदरवाइज अगर हम सारे मैच हार देते तो, और उसके बाद अगर कोई टीम समझ लो कि उनका जहाज गिर जाता और फिर उसकी वजह से हम पहुंचते, देन आप बोलेंगे यार ये तो लगती कि यार एक Yeah, टीम ही नहीं आ but I disagree with that. No, I'm I don't sorry. think so. Right? No, no, You no, no, can't no. have all teams winning all games No, and no, then no. No, it reaching the doesn't have to semifinals. be all All games, games, but but then this you a can't just comprehensive win versus all games is very different, right? You A you win is a win. win. No, I understand the win is win a is win, a but then win. but in the last few years, I would say in the last 5 6 years or maybe 8 years, all the ICC events that we have, I mean not all, but I'm just saying hypothetically, pick up a few ICC events, 2019 World Cup, 2020, 2021 in Australia, even before. Pakistan got into the knockout stages because if this team will lose against this and that team will lose against that, and Pakistan had only won a couple of games, that has always been the case in the last decade, I would say. Right? Right, You but can't. Pakistan still had to win Even their own even games. Champions Trophy by the way, right? I mean हम इंडिया से हारे पहले कुत्ते की तरह, ठीक है? उसके बाद अल्टीमेटली हाँ ठीक है, हम पर कभी कभी नॉकआउट सीरीज में जो when we peak at the right time we were able to No, but Champions Trophy, we won comprehensive games. It's not like we had to wait for this team to lose and that time to have. We won against Sri Lanka. We won against South yeah, Africa. We beat we England. collapsed pretty badly like also, right? I mean और you can argue कि even वो against India. you can argue that श्रीलंका में that उनका प्लेयर ने फराज का कैच छोड़ा, डॉली था, तो that is also like, ऐसा नहीं था कोई बहुत टफ कैच था जो छोड़ दिया, तो it could have gone either way either, तो you can argue luck तो स्टैंड हर जगह पे करती है, but there are variations of it, I agree कि ऐसा नहीं है comprehensively हम पहुंचे, but at the end of the day 10 मैचेस जीत के you lose the final, it's the same thing that you get out of the first round, honestly, especially when you are a team that is looking to win the whole damn thing, ठीक है। अब इंडिया को ये जो अब इंडिया को फॉर एग्जांपल हम वर्ल्ड कप पे बात कर लेते हैं, इंडिया अब इसके पास, इंडिया को कहने को ये नहीं है कि यार वी वन द हार्ट्स एंड दे वन द कप, वन द हार्ट्स वाली नहीं सिचुएशन आपकी, व्हेन यू आर विनिंग गेम्स सो कंफर्टेबली एंड सो डोमिनेटली कि मुझे तो याद नहीं आ रहा कि even Australia at their peak in each World Cups that they were playing and they won, they didn't dominate like this ever. ऐसा नहीं हो रहा था 400 रन बनाए थे और दूसरी टीम को 100 के अंदर आउट कर थे, ऐसा कभी भी नहीं किया उन्होंने। यार ऐसा तो कभी किसी ने भी नहीं किया ना, जिसके किसी बाद भी में सारी बातें शुरू हो गई कि बॉल में कुछ है तो पिच में कुछ है तो इसमें कुछ। यार देखो, आई डोंट थिंक देयर इज एवर बीन अ बेटर टीम देन द 99 पाकिस्तान टीम बाय द वे, ठीक है? या और उसने भी कभी ये नहीं किया, ठीक है? एग्जैक्टली, और ऑस्ट्रेलिया की 2003 की टीम ने भी ऐसा नहीं किया था कभी भी नहीं। नहीं. कि वो थोड़ा बहुत यानी कि क्लोज मैचेस देते थे फिर जीत जाते थे, एज दे डू एज ऑस्ट्रेलिया ऑलवेज डज, लेकिन जो डोमिनेशन जो इंडिया ने शो करी है, तो to say कि India dominated the World Cup and just happened to lose the final is equal to is better than Pakistan getting out, not even getting there, you know for India they can't say that. Yes, for for if another team had lost the final like New Zealand for example, हम कह सकते थे यार एटलीस्ट चलो फाइनल में तो पहुंचे ना, वो बनता है उनका, जैसे हम फाइनल्स में पहुंचे तो हमारा एक इट्स एन अचीवमेंट इन माय आइज अगर हम फाइनल्स में पहुंचते हैं, सेमीफाइनल्स खेलते हैं, बिकॉज वी आर सो short on so many other resources. तो जो जो इंडिया की तरफ से जो इंडिया का जो समझ लो कि एक अचीवमेंट है, इट के नॉट बी लेस देन अ कप। अब आप खुद सोचो, लास्ट आईसीसी ट्रॉफी वाज इन 2013, मोर देन 10 years नाउ ऑलमोस्ट। तो इनका जो जनरेशन विच इज आई थिंक probably the greatest generation to ever play for them, इसके बाद इससे बेहतर तो मुझे नहीं लगता कोई आएगा, एटलीस्ट इन एनी ऑफ दोज डिपार्टमेंट्स। शायद बॉलिंग बहुत अच्छी हो जाए या बैटिंग बहुत अच्छी हो जाए, इट कांट बी द सेम लाइक बोथ ऑफ देम टुगेदर। इनकी हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ कि बैटिंग और बॉलिंग एक साथ इतनी वर्ल्ड अच्छी, क्लास हाँ। वर्ल्ड क्लास आ गई हो, एंड देन फॉर दैट टीम टू नॉट विन, आई थिंक इट्स अ मैसिव फेलियर। यार आप ऐसे देखो ना, हमारा एक नसीम शाह जो है वो आउट हुआ एशिया कप के बाद, पूरी टीम आगे पीछे हो गई, ठीक है? हाँ। इनका पांड्या
middle of the tournament गया and nobody even gave a damn अबे कि टीम बन पांड्या गई, चला गया, उल्टा टीम बन गई। उल्टा टीम बन गई, ठीक है। and maybe you could have said कि हाँ फाइनल में अगर पांड्या होता तो he would have made a difference by the way, because इनके स्पिनर्स को मार पड़ी है और वो बीच में आके थोड़ी वेरिएशन करता है इधर उधर, तो शायद एक आध और विकेट निकाल लेता, ठीक है। आ yes, सकता but था। nobody's even talking about it, ठीक है, because they don't Forgot it. care, everyone is easily replaceable, And ठीक he है। was a captain not so long ago. हाँ, और वो ये जो सारा थियरी है ना अराउंड टीम कॉम्बिनेशन, विनिंग कॉम्बिनेशन, ऑल दैट बुलशिट, द वे दे स्विच देयर प्लेयर्स अराउंड एंड एवरीवन जस्ट कम्स इन एंड परफॉर्म्स, इट्स नो जोक। इन्होंने लाइक लिटरली क्रिकेट चेंज कर दिया उस सेंस में। Yeah, but then you're also That's talking true. about a population of 1.6 billion people, where Yeah, they, but the you team know, combination and all that stuff, sir, right? I mean, it's a thing, right? You always say, "Oh, winning combination है, change ना करो, ये ना करो, team set है, you know, you're playing 11 set, ये वो, true. you know." But they do it, and it Yeah. doesn't make a difference to It them. doesn't change anything for them. But anyway, I think the thing that I was trying to get at is I think हमारे पास जो सबसे बड़ा issue इस वक्त lack कर रहा है, जो मुझे लगता है, वो लगता है कि key moments में गलत decision लेना। South Africa game, Babar gave the over to Nawaz when it should have been, you know, a leg spinner. And I think किसी भी बंदे ने ऐसा नहीं कहा था कि उसकी कोई वजह नहीं बनती थी। Again, it was very, you know, these odd decisions. I feel like the wrong time, Yeah. wrong decisions, small things happen. For example, India वाला game in Australia जो साहिर भाई देखकर भी आया, उसमें although you can argue कि यार he went for the kill, कोई बचा नहीं था और आखिरी में एक बंदे का ओवर बचा था जो उसका था। But again, अब नवाज पे आप जाएं, Nawaz balled fucking wides in the last over. And if he could have just balled like पता नहीं क्या भाग के और run up कर रहा था, it was so weird. यानी कि we are making these weird decisions in like crunch situations कि आपको दिमाग समझ में नहीं आता कि ये हो क्या रहा है। इसका मतलब ये है कि आप pressure handle करना नहीं आ रहा आपको, या आप, you know, you're not ready for the stage. No, but I then think there's again, sorry, I'm going to interrupt here because I'm going to say नहीं नहीं, बोलो back to the point where Mustafa made, right? Not every player, captains. At the end of the day, it's captain's decision and captain's move who needs to make it the end, right? Now let's take a step back and ask this question: was Barber really a captain material? Was that, or he was just captaincy was handed over to him because did we have He no was options? performing well. He was performing well. I don't. Yeah, Yeah. I don't think he was ever captain Yeah. material. दूसरी बात है कि everyone Yeah. just looks up to him. Correct. ठीक है, इनमें Yeah. से किसी की भी, ये आप देख लेना, हसन अली का इंटरव्यू देख लें, कुछ भी देख लें, they like look up to him, right? They're like in awe of, you know, him. genuinely look up to him, वैसे actually कहना पड़ेगा। Genuinely look up to him. But then उठाओ गिरी नहीं कर रहे। People respect him. People respect him based on his performance, based on his batting stance and action, whatever you want to take it. Right? He has performed in the past. However, does the guy is a captain material? I have a huge question mark on I don't that. think so. He's not. दूसरी बात ये कि, you know, the way he was batting before he became the captain versus after, ठीक है, even though उसने बहुत अच्छी performances भी की हैं, सब कुछ की है, ठीक है, but he's not winning games for us, especially in a crunch chase situation, and I think it has to do with And his captains. it's the same situation what happened with Sachin Tendulkar. I mean, I'm not comparing apples to Even apples Kohli, here, yaar, right? even Kohli for that matter. Yeah, I mean, Kohli was still making runs. India was still, winning, not winning. That's the difference. 3 साल जब उसने नहीं बनाए सेंचुरी, तो वो वही पीरियड था ना basically. Right. Yeah. So that's what, going back to the point that I've made many times: a great player cannot be a great captain. No, that's not necessary. You're right. Absolutely, I agree with that. And Babar Azam was given the captaincy without any, qualifications. Like he had the only qualification he had, that he was a captain of Karachi Kings in PSL. Or not even. Sorry, I take that He back. was not Imad that Wasim. successful. Performance No, he wasn't. He wasn't. Imad Wasim Sorry. Then he recently became captain when Peshawar took him. So that means that there is no other thing of qualification of him being a captain of even domestic side, the domestic circuit. Did he captain our under 19 team when he was in the under 19? But he scored. But he's also scored more hundreds than any Pakistani captain as a Pakistani player as a captain. Like that is where my problem is, right? See, he's the best. That's the problem, right? He will always be better than anybody else when you compare him with other people, right? That's the issue, right? Right. You know, but this the whole fact that the argument, captaincy is getting to him is also like, it's hard to believe through numbers, well, because because there's no he other averages. benchmark, right? I Because know, but there's he no other averages benchmark. 64 as a captain.
great, but what is it getting us in a crunch situation? That's the problem. Is that क्रंच match सिचुएशन winning की बात, 64? हाँ वो बिल्कुल अलग, वो अलग बात है। देखो अब जैसे कि इस टूर्नामेंट के एग्जांपल ले लो, अगर आपके बॉलर्स कुत्ते की तरह पिट रहे हैं फर्स्ट 10 ओवर्स में, देयर इज नो नथिंग दैट अ कैप्टन कैन डू फॉर दैट। You know, either you bowl in the right areas, you get the wickets, or you don't get the wickets. There's nothing a bowler like a captain can influence. No, of course they कुछ can. चीजों में Why Captain can't they? can The captain can influence. influence, right? कैसे, The captain Captain can how can of course influence. they how can. can he influence? No, hold on. So यार मैं इसकी फील्ड मैं कैप्टन सेट फील्ड करता तो कैप्टन सेट करेगा ना। मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ। साउथ अफ्रीका मैच की बात कर लेना, जब हमें 20-25 रन चाहिए थे, आप फील्ड सेट देख रहे थे उस वक्त क्या हाँ था? मुझे कोई याद है, मुझे अटैकिंग याद है। फील्ड सेट ही नहीं था। हाँ इंटेंट वाज नॉट देयर। आई मीन एवरी सिंगल बॉल पे मैं ये कह रहा था कि यार ये क्या हो रहा है, ये वाइड क्यों हो रही है, स्लिप ये खड़ी सिंगल करो, क्यों स्लिप ले पे रहा है, खड़े करो, स्लिप पे बंदा स्लिप खड़ा खड़ा करो। करो, कोई अटैकिंग फील्ड लेकर आओ। दैट रिंग इज में अप लेकर टू आओ, द हाँ कैप्टन। रिंग में लेकर आओ। एग्जैक्टली, देयर वाज नो इंटेंट। वो अपने उसी हिसाब से यार बस एक विकेट मिल जाएगी, वो एक तुक्के में फ्लूक में रह रहा है, ठीक है, विदाउट अंडरस्टैंडिंग व्हाट द सिचुएशन रिक्वायर्स। एंड आप थोड़ा सा बैकड्रॉप अब इसका देखें ना, व्हेन बाबर आजम बिकेम द कैप्टन, लाइक व्हाट वाज द सिनेरियो वाज कि जी सरफराज इज द वर्स्ट पर्सन alive on the face of the earth। सरफराज इतना बुरा हो गया कि जी वो एक ओडीआई सीरीज के बाद जो हुआ, और फिर वो जो क्या कहते हैं, सॉरी T20 से जो एक दो सीरीज आई थिंक हम हारे थे कंसेक्यूटिव, आई थिंक वर्ल्ड कप के बाद फिर सरफराज को हटाया श्रीलंका गया। से हारे थे, हाँ वो। इस श्रीलंका से हारे थे। अब भाई देखो, यही सारा मसला है हमारा, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अनफॉर्चुनेटली ना, दे जस्ट डोंट हैव द राइट प्रोसेस, राइट। कैप्टन जब आप बनाते हो ना किसी को, तो वो बनाते हैं जी अच्छा जी सोशल मीडिया में कौन चल रहा है। मुझे अभी भी याद है उस टाइम पे आकिब जावेद का इंटरव्यू था, और आकिब जावेद साहब इतने आराम से, बाय द वे आई मीन ग्रेट पर्सन एज अ क्रिकेटर मे बी, बट आई मीन सॉरी टू से आई फाइंड हिम वेरी स्टूपिड इंडिविजुअल। ही सेड कि इस वक्त सबसे अच्छा कैप्टन जो है ना वो है बाबर आजम। और मैं उस वक्त सर पे हाथ रख के बैठ गया, मैं रिकॉर्ड्स चेक करना शुरू किया, मैंने कहा ऐसा क्या है कि ही इज मेकिंग और कॉलिंग बाबर आजम एज द बेस्ट फिट टू बिकम द कैप्टन। अभी आप इंटरव्यूज अगर आप लोग फॉलो कर रहे हैं, कोई अगर आपने रिसेंटली देखा हो, तो नाउ ही इज पिचिंग शाहीन। और अब मुझे इस समझ में नहीं आ रहा, ठीक है ओके शाहीन फिर भी कह सकते हैं 2 PSL जिताए, ओके दैट्स फाइन, बट आई स्टिल डोंट थिंक दैट शाहीन इज अ कैप्टन मटेरियल एट ऑल। ही इज द यंगेस्ट प्लेयर ऑन द साइड, ठीक है। यू नीड सम एक्सपीरियंस, यू नीड सम लाइक यू नो, ठीक है, आप एज अ कैप्टन आप चलो थोड़ा बहुत और आपको टाइम मिले, ही इज स्टिल वेरी फ्रेश। तो T20 यही मुझे लगता है मसला। our side captains itself, honestly मुझे लगता है कि our side captains itself, and आई to थिंक be honest बाबर आजम को ही कंटिन्यू करना चाहिए था एज अ कैप्टन। आई नो, आई थिंक ही सेड नो कि भाई या तो मैं he resigned, रिटायरमेंट हाँ होंगे, he resigned। या वो वाला चलो एक अलग फैक्टर है, बट टू पर्सनली आई मीन सरफराज वुड हैव बीन अ मच बेटर चॉइस देन शाहीन। बट अनफॉर्चुनेटली वही बात है ना, अब सरफराज को फिर से लाएंगे तो फिर देन दे विल हैव टू आंसर द मीडिया कि यार पहले फिर निकाला क्यों था, तो फिर दे वोंट बी एबल टू जस्टिफाई अबे दैट। ये इतनी फिक्र करते हैं ना कि कौन किसको निकाला तो लेकर कैसे आए, नहीं, ये तो think ये नहीं about all करते। these they don't semantics, I think think that's so what's the pressure, like I mean सवाल ये है, सरफराज अहमद कायदे आजम ट्रॉफी में आई थिंक ही वाज द सेकंड और द थर्ड हाईएस्ट स्कोरर, played जो really well, रीसेंट हाँ कार्ड थे, ठीक है। हाँ। T20 की परफॉर्मेंसेस ठीक है, नॉट ऑन द टॉप, बट ठीक है ही इम्प्रूव्ड अ लॉट। एंड आई थिंक जो टेस्ट सीरीज हुई थी उसमें भी काफी अच्छा कमबैक किया, जो रिसेंट आई थिंक किसी टीम के साथ हमारी जो he टेस्ट did सीरीज well, हुई थी हाँ अगेंस्ट श्रीलंका श्रीलंका। श्रीलंका, एग्जैक्टली राइट। सो द पॉइंट इज कि व्हाई नॉट ब्रिंग हिम बैक as for to take over the captaincy responsibilities। और मसला एटलीस्ट सारा वो यही है ना अराउंड कि द स्क्वाड तो रहा है ना, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही आउट था वो, he was in the और squad देखो he was which is just not there but playing। not playing। he has been your captain forever, ठीक है। Yeah, and तो वो and अंडर and 19 से लेके हर डोमेस्टिक टीम में, हर पीएसएल टीम में जिसमें वो खेला है, he's been the captain, right? So he's खानदानी exactly। like कैप्टन। one खानदानी captain है basically, right? हाँ, हाँ तो उसको आप you could have actually very easily just brought him back and made him the captain, तो उसके ऊपर ना pressure होता ना कुछ, वो exactly। come back कर रहा है, तो Yeah, you know he would have और वो done शान मसूद से better। 1 साल बड़ा है सिर्फ, तो आई थिंक if you're going to Australia you could have just made like interim captain and said you know what सभी हाँ, भाई और take this one and then we'll figure out। शान को ट्रेन कर हाँ देते उसके अंडर। हालांकि yeah। शान और उनमें 1 साल का ही फर्क है, को उठ के कि यार मेरे बराबर का बंदा, इसको मैं क्या ट्रेन करूंगा। I mean देखो ना, ये जो सक्सेशन प्लानिंग होती है ना, आप कैप्टन और वाइस कैप्टन के हिसाब से आप लेके चलता हो। आपका वाइस कैप्टन था शादाब, राइट। उसकी जगह नहीं नहीं नहीं, बनती टीम में। उसकी जगह नहीं बनती अब टीम उसकी में। जगह नहीं वाइट बनी। बॉल में था वो, लेकिन टेस्ट के अंदर रिजवान था, टेस्ट के अंदर रिजवान था, लेकिन अभी वाइट बॉल में शादाब था, तो क्या वाइट शादाब बॉल था। का कैप्टन क्या शादाब होगा? आई नहीं एम नॉट तो श्योर। वो तो शाहीन है ना। Honestly, I personally think नहीं नहीं, मैं and ओडीआई। ODI की बात, ओडीआई में ODI नहीं, में I think they're going to bring back Sarfaraz. That's what I think. दैट्स व्हाट आई थिंक इट शुड बी। Yeah. या, आई डोंट नो, बिकॉज मे बी परफॉर्मेंसेस भी T20, हैं, मे बी उसकी टेस्ट में शायद जगह बन सकती है, हाँ मे बी वनडे भी बन सकती है, आई कैन सी वनडे में दैट। बन सकती है।
वनडे में I mean जो सिर्फ एक पॉइंट आता है वो ये कि आप 2 विकेट कीपर के साथ जाओगे, that's the because you can't remove Rizwan at all. रिजवान इज अ वेरी Right? गुड फील्डर आल्सो, तो उसका मुझे टेंशन नहीं है कि वो फील्डिंग नहीं कर सकता. ही कैन डू फील्ड, ही You कैन can फील्ड. play him as a specialist batsman. Yeah, but हाँ, ही कैन प्ले एज अ स्पेशलिस्ट बैट्समैन. Yeah. बट अगेन द क्वेश्चन इज कि अगर जो अभी मैंने तुम लोगों को 2-3 एग्जांपल्स बताए थे कि जहां पर वी लॉस्ट आवर शिट एंड द क्रिटिकल मोमेंट, ठीक है ना. अब आप इसी तरीके इस वर्ल्ड कप के अंदर वी लॉस्ट आवर शिट अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, यू नो, कि जब मुझे लगता था कि वी कुड हैव चेस्ड 370 व्हाटएवर दैट वाज, लेकिन एक विकेट गिरी एंड थिंग्स गॉट ओवर द प्लेस और फिर हम फट गई हमारी. साउथ अफ्रीका के खिलाफ वी लॉस्ट आवर शिट, 25 रन रह गए थे, एक विकेट थी या 2 विकेट थी. easily you could have gotten them out अगर आप फील्ड अंदर लेके आते. चलो मैक्रो डिसीजंस तो आप ब्लेम कर सकते हो कैप्टन के, लेकिन की मोमेंट्स पे ना somehow something happens and we बॉल स्लिप हो जाती है हमसे, कुछ भी हो जाता है, बचौदियां होती हैं. तो इस तरह की चीजें क्यों हो रही हैं एंड हाउ डू यू नो चेंज दैट. और ये सब चीजें मैं जब देखता हूँ ना कि ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के साथ, ऑस्ट्रेलिया की अगर आप देखो ना पेपर पाउंड फॉर पाउंड ये कोई बेहतर टीम नहीं है, बहुत अच्छी टीम नहीं है ये. यानी कि पाकिस्तान ऑन पेपर शुड बी एबल टू compete with this team easily and we did, to be honest, और for the भाई अब longest. देखो ना, अब रिसेंटली जब हम ऑस्ट्रेलिया से खेलते हैं, आई नेवर फील लाइक थ्रेटन कि ये थ्रेटन, ऑस्ट्रेलिया हाँ, से खौफ खेलते नहीं, हैं. हाँ. कभी भी नहीं होता. अब इनफैक्ट लाइक लिटरली अब इंग्लैंड से होता है थोड़ा सा. अब इंग्लैंड को खेलते तो थोड़ी इंडिया फटके से के होता है. यार ये बजा देंगे. हाँ, इंडिया से तो खैर हाँ, नेचुरल है, ठीक है. हमेशा 50-50 होता है, ठीक है. लेकिन हाँ, लाइक लिटरली इस टीम को जब हमारी ये टीम खेलती है, लाइक इवन साउथ अफ्रीका फॉर दैट मैटर, याद है एक जमाना होता था साउथ अफ्रीका वो यूज्ड टू बी ऑल ओवर अस, ठीक है. हाँ. चेंज हो गया. इट्स अब नॉट वो द सेम. अब वो डायनामिक नॉट चेंज हो द चुका है. सेम. हाँ. हाँ, तो न्यूजीलैंड what? का कभी भी फियर फैक्टर नहीं Yep. था, ठीक है. कभी इंडियन से फटती है, ठीक है, आप पूछो हाँ, उनसे. नहीं नहीं हाँ, नहीं होगी भाई, पड़ती है. न्यूजीलैंड मार देगा हमें. हाँ, अब खैर रिसेंटली हाँ, दे डन वेल अगेंस्ट न्यूजीलैंड एज वेल. So, to answer Zabe's questions here, right? So, I think there are two factors here. Number one, there's a psychological effect, and I'll explain you what. None of these big threes and big four teams, like at a full at their A level, comes to Pakistan. ठीक है? मतलब हाँ. कि अगर ऑस्ट्रेलिया की आप टीम ले लो, अगर ऑस्ट्रेलिया भी पाकिस्तान आए तो उनकी ए टीम कभी नहीं आती, वो अपनी बी टीम को भेजेंगे, और उसमें भी हम फेंटी खाते पाकिस्तान में. ठीक है, हालांकि अभी जो आई थी वो अच्छी तगड़ी टीम थी, लेकिन टेस्ट हमने सीरीज लेके फेंटी गई खाई है. उनसे. ठीक है, फेंटी ठीक खाई, ठाक पेल के खेल गई के है. गई हमें. ठीक है, हाँ, लेकिन टीम अच्छी थी वो. जो भी ठीक है, चलो ए टीम भी हाँ, आई, लेकिन उन्होंने आपके हाँ, होम ग्राउंड में आके आपको फेंटी मारी है. ठीक है, हाँ, ये तो है. फिर आपकी श्रीलंका की टीम भी आती है, श्रीलंका से भी आप हारे हो. अरे ठीक है, सी टीम से. सी टीम से हारे श्रीलंका की. फिर इंग्लैंड की भी टीम आई जिस मोइन अली ने लीड की थी वो वाली, उससे भी आप हारे. ठीक है, हाँ, तो अबे तो बाबर का रिकॉर्ड है किसके हाँ, अगेंस्ट फिर? तो अब ये तो मोइन टेस्ट की बात कर रहा हूँ, ये मैं टेस्ट की मोइन बात अली. कर रहा हूँ. ठीक है, तो अब वनडे भी ले लो, टेस्ट भी ले लो, तो आप अपने होम ग्राउंड के अंदर ही इंटरनेशनल टीम जो आप कंसिडर करते हो कि जो बिग टीम्स हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड एंड साउथ अफ्रीका, मुझे नहीं पता आई है रिसेंटली, आई थी, श्रीलंका भी आई आई है. थी. ठीक है, साउथ अफ्रीका भी आई, चलो उन सब से आप हारे हो घर के अंदर. तो पहली बात तो ये कि साइकोलॉजिकली आप अगर घर पे ही हार रहे हो, एंड व्हेन यू गो आउटसाइड एंड प्ले इंटरनेशनल गेम्स अगेंस्ट दिस ऑल दीज टीम्स, तो वहां एक साइकोलॉजिकल मार आपको पड़ चुकी हुई है कि भाई, इफ वी लॉस्ट इन अ होम ग्राउंड, हाउ विल वी विन इन डिफिकल्ट सिचुएशंस एंड आउटसाइड. पहली चीज तो ये. ठीक है, दूसरी चीज, गोइंग बैक टू फिटनेस. ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि मुझे एग्जैक्टली पता है क्या है, लेकिन ऑफ कोर्स आई वॉच द पेविलियन, आई वॉच अदर थिंग्स. वसीम अकरम हाँ, का भी बयान था कि 2 साल से किसी का फिटनेस टेस्ट ही नहीं हुआ हुआ. राइट. तो एक क्राइटेरिया है फिटनेस की आपकी. ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के लोगों से आप देखो, हम एक बातें करते हैं कैचेस विन्स मैचेस, राइट. हाँ, हमारी फील्डिंग आल्सो विन्स मैचेस और नॉट, राइट. लुक एट ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स, ट्रेविस हेड ने जो कैच पकड़ा है उसका, रोहित शर्मा का, would we ever गेम think चेंजर था of वो. dreaming of jumping on making that catch? Of course not, right? नो, So this whole thing plays a vital role here. So going back to इट डज. हम जो ये जो pivotal situations के अंदर, या ये जो crux situations के अंदर जो हम लोग की जो फटके हाथ में आ जाती है, वो इसी रीजन से हाँ, आती है. पहले तो साइकोलॉजिकल मार पड़ चुकी हुई है, और फिर एट द एंड ऑफ द डे हमने डाइवे मारनी नहीं है, रन आउट उस पे हमारे यहाँ हाथ पे स्क्रैच पड़ जाएगा, फलाना हो जाएगा. ये these all things matter. And then going back to the original thing, fine, if you're in a crucial situation where your main two openers are out and now you're one down, two down, three down players are batting, if Iftikhar is batting and the other guy, कौन है आपका जो सर बाबर के बाद आता है, अभी जो साउथ शकील. साउथ शकील या कोई भी आ रहा है, राइट, एंड फाइन, दे नीड टू होल्ड द विकेट.
who sends the message कि आपने खेलना किस टाइम एक्सेलरेट करना है, किस टाइम आपने डिफेंसिव करना है, वो तो बाहर कैप्टन से या आपके कोच से या मैनेजर से मैसेज आ रहा है ना। वो तो आपकी टीम होती है, वो तो बता रही होती टीम है, आपको जैसे पूरा एनालिटिक्स टीम इंडिया को बता पता रही है, कैप्टन बता रहा है आपको। गोइंग बैक टू द फैक्ट दैट बाबर इज नॉट अ कैप्टन मटेरियल, वो अपने आप पूरा एनालिटिक्स नहीं कर सकता, तो वो दूसरों को क्या करेगा? है। वो आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ। क्या कहते हैं, मुस्तफा, यू वर सेइंग समथिंग? No, Amazon. नो, मैं बिल्कुल उस जो फिटनेस वाली बात है तो उसका तो कोई एक्सक्यूज नहीं है, एंड आई एग्री 100% एग्री विद यू कि यार आई थिंक फिटनेस इज अ मेजर इशू। द ओनली थिंग आई वुड क्वालिफाई इज जो होम होम गेम जो हम हारे हैं, व्हिच इज a shame, and I agree उसका impact होता है psychologically, but I will qualify that because क्योंकि वो हमारी first time है after like I don't know a million years कि घर पे कोई बड़ी टीम आ रही है, ठीक है ना? तो I don't know, हमारी टीम is यार not वो भी भाई तो फर्स्ट 5 टाइम टीमें है। आ गई ना, 5 टीमें आ गई I ना, know, तो आप अबे 2 मुझे से पता फेंके है, खाओ, बाकी 3 पे तो सही कर लो। I know, लेकिन ये ऐसा नहीं होता है कि आप it's not a flick of a switch. It takes time, और हमारी pitches भी जो तैयार बन रही हैं, like it's multiple other factors in ये play. Not जो भी है, excusing the performance, not excusing the performance. अगर हमने 4 डे खेला हुआ है उन पिचेस पे, so we should be better than a team that's coming after like 30 years, like उनकी शायद Agreed. स्टाफ में भी कोई नहीं है जिसने खेला होगा। एग्रीड, ठीक नो है। आई एग्री, मैं एक्सक्यूज नहीं कर रहा उस चीज़ को, मैं बिल्कुल माइनर क्वालिफिकेशन दे रहा था कि ये फर्स्ट सीजन है, मे बी आई थिंक इस नेक्स्ट ईयर दोबारा आ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, नो ऑस्ट्रेलिया नहीं, इंग्लैंड नेक्स्ट ईयर और द ईयर आफ्टर दे आर ऑल कमिंग अगेन। तो ये सब होपफुली उस वक्त तक थोड़ा सा बेहतर इन लोगों को समझ में आ जाएगा, बट आई डू अग्री कि एक्सपोजर का बहुत बड़ा, आपने देखा ऑस्ट्रेलिया की टीम, one of the biggest reason why they were successful in India is because of IPL. They knew all of those grounds inside out like the Indian team does. उनका हर प्लेयर किसी न किसी स्टेज पे किसी भी इन ग्राउंड्स पे खेला हुआ था, यानी कि वो कौन सा नॉर्थ पे कौन सा ग्राउंड है उनका जो बहुत ज्यादा लोग जा रहे थे, को पीसीस का अ, नाम है हाँ, धर्मशाला है, धर्मशाला, धर्मशाला। धर्मशाला, हाँ धर्मशाला, वहां पर उधर भी ऑलमोस्ट हर टीम खेली हुई थी। ये अहमदाबाद पे ये लोग खेले हुए थे, लखनऊ में खेले हुए थे ये लोग, हाँ, दिल्ली और बैंगलोर में तो खेले ही हुए हैं ऑब्वियसली। वांकड़े बॉम्बे के अंदर सब जगह खेले हैं। सब जगह एवरी प्लेस दे न्यू, यानी कि वार्नर कोई जगह नहीं छोड़ी है, वार्नर तो सड़कों में भी खेल चुका है वहां पर इंडिया की। तो वो बहुत बड़ा फैक्टर लगा था। आई थिंक द ओकेजन वाज आल्सो सो बिग, स्पेशली द अहमदाबाद वाला गेम पाकिस्तान इंडिया का, the occasion I felt like it just didn't seem like the team was, they believed in themselves. Yeah, but then Zeb, the whole that if that's the point, then England has the same thing, right? England, every single player has played in every single ground over there as well. Right. या आई एग्री, मैं लाइक हमारे साथ और फैक्टर्स हैं, उसके अलावा भी मुझे लगता है कि ये फैक्टर भी काउंट करता है, क्योंकि व्हेन यू डोंट गेट एक्सपोजर टू दीज बिग स्टेडियम्स, आई मीन हमारे लाइक इमेजिन दिस, हमारे किसी प्लेयर ने जिंदगी में इंडिया में नहीं खेला, लेट अलोन लाखों लोगों के सामने, जिंदगी में इस तरह की क्राउड, यानी 40,000 ज्यादा के लोगों के सामने हमने खेला ही नहीं कभी Is that जिंदगी में। true? Like 2-3 साल पहले एशिया कप नहीं होता इंडिया में क्या? नहीं भाई, इंडिया में तो खेला ही नहीं हमने। ये इस टीम में से सिर्फ एक बंदा खेला है, वो भी नवाज, वो भी कोई अंडर 19 के टाइम पे। हाँ, बहुत पहले। तो this like none of us have played in India. That's a huge thing. Like आपके first exposure था in a massive World Cup game. तो I think the occasion got to us. The one thing that again Pat Cummins की मैं वो देख रहा था कि उसको वैसे उसको होम में ना उसके घर में उसकी बहुत फेंटी लगती है, ते से कि यार ये डम कैप्टन है, इसको इसकी आईक्यू लेवल कम है इसका, और वो कभी कभार ऐसी बातें कर भी देता है, जैसे उसने बोला था मुझे पिच रीड करना ही नहीं आती, he said it himself, yeah, he pitch read, he took a picture, actually he took a picture of the pitch so that he can show to his team in the analytics room कि यार ये बताओ क्या है इसमें, what does it say, so he doesn't even know admittedly how to read a pitch. तो लेकिन उसने एक स्टेटमेंट बहुत अच्छा दिया था जो कि I found like that was I think sometimes those small things kind of make a difference. He said कि यार आई नो 1.5 लाख लोग बैठा होगा whatever जितना भी, लेकिन उसको खामोश करने में सबसे ज्यादा मजा आएगा हमें। Yes, And it that was was such a an statement. Australian statement to make, Yeah. arrogant at the same time, but also like looking at the half, glass half full. I never heard that from our captain, right? हमारी टीम या हमारी कैंप से इस तरह की आवाज नहीं है अहमदाबाद गेम से पहले. It was too यार हाँ, nice. थोड़ा सा आई थिंक वी हैव The आल्सो la- मूव्ड अवे फ्रॉम आवर नेचुरल डीएनए जो हुआ yeah, करता था ना, आवर टीम्स यूज्ड टू बी वेरी एग्रेसिव। अब yeah. जाके you're cleaning up the airports and making video, वो देखी है ना तुम लोगों ने, ठीक है, फ्लाइट हैं, से पहले लाउंज अबे वो क्लीन जो कर रहे हाँ, हैं, like जो what साउथ कोरिया की टीम बन गई हम लोग, साउथ like कोरिया बन गए हम. what the hell are you doing, right? I mean, बॉल उठा के दे रहे हैं, थैंक यू कर रहे हैं, like what the fuck यार।
Yeah, you're not right, Gurta. I 100% agree with Farooq. Right? मैं साहिर भाई को नेट्स में नहीं बॉल उठा के देता कभी, कहता हूँ उठा लो आके, उठा के ले लो आके। सही। I 100% agree with Farooq on this. The aggression part of our fast bowlers, जो वसीम वकार शोएब, मैं तो कहता हूँ like literally फर्क कहता है ये लो ये उठा लो। ये फेंक दी इधर इधर। No, I mean मैं कुछ और कह रहा था लेकिन I would say Haris Rauf should have come and then like पसलियां तोड़े, यहाँ पर बॉल मारे, like do something and go get on their face and show them aggression, banter करे, sledging करे, गालियां गलौज दे। यहाँ तो हम लोग भले पिटे उसके बाद, लेकिन एक खौफ पैदा करे। जो शोएब अख्तर बेशक कितने उसको टॉप एज पे छक्के पड़ते थे, लेकिन उसकी खौफ था, डर बैठा था शोएब अख्तर के। शोएब अख्तर की बॉल लगी, हम तो गए वारे न्यारे हो गए हमारे सारे। यार अभी कुछ 2 महीने पहले हमारे इंडिया के साथ जो एशिया कप का गेम था, जो कि रेन से कॉल ऑफ हो गया था, आई स्टिल रिमेम्बर कि उस गेम के खेलने तक आवर बॉलर्स वर ऑन टॉप ऑन देम। लाइक हम लोग मान चुके थे कि हाँ हम मान चुके थे कि यार ये सबसे बेस्ट बॉलिंग यूनिट है, हम मान चुके थे। खेल रहा था, cause नसीम खेल रहा था, और फिर नसीम से जो आपको वेरिएशन मिलती है ना, cause that guy can swing the ball. That guy can swing the ball. That guy creates the pressure, Both and ways. then Shaheen takes the wicket, and the other side takes the wicket. वो पूरा scene है, but Naseem was highly missed in this World Cup. Highly missed. But देखें बात सारी ये नहीं है। चलें, I completely agree that Naseem provides that counter support that's needed for the other end bowler, but basics, bowling 101 basics were missing in a lot of spells in this World Cup from our bowlers. यार आप length ball नहीं कराना जान पा रहे। कैसे शाहीन की If Haris Rauf is listening, please listen, take notes. Haris Rauf, what was he doing? राइट, आई मीन मीम्स बन रहे हैं इंटरनेट पे कि भाई ये 4 बैट्समैन हैं, इनके रन्स हैं और हारिस रऊफ के तो ज्यादा रन्स। ये मीम्स बन रहे हैं, ठीक है। आई मीन लाइक दिस इज अ कॉल फॉर द बॉलर टू अंडरस्टैंड कि यार दिस समथिंग फंडामेंटली रॉन्ग। वो पहला ओवर कौन से मैच के अगेंस्ट है, इसमें 20 रन पड़ गए थे, सारी बाहर बॉलिंग कराई यार, सारी बाहर बॉलिंग करा रहा है यार। कांट यू सी लाइक द स्वीट स्पॉट वेयर यू शुड बी लैंडिंग द बॉल यार। इतने और उस सिचुएशन में अगेन कैप्टनसी वाज लैकिंग इन द सेंस कि उसको पहले 10 ओवर में नहीं कराना चाहिए था। पहले 2-3 गेम्स के बाद मैं जो पिट रहा था तो कहते हैं यार छोड़ दे भाई, इसको फील्ड फैला के मैं खिलाऊंगा, तो फैलाया था। सर भाई मुस्कुरा रहे हैं, कह रहे हैं लुक हूज टॉकिंग। भाई वो बात ठीक है साहिर भाई, वो हमारा वक्त तो था, लेकिन द पॉइंट इज कि यार ये वो बेसिक्स हैं, ठीक है, जो कि इंटरनेशनल बॉलर्स जो कि सो कॉल्ड बहुत ही अच्छा बॉलिंग यूनिट हमारा, वैसे मुस्तफा ऑन दैट नोट लेट्स ये बात ये भी नॉट टू फॉरगेट कि इन द लास्ट बिफोर द वर्ल्ड कप 17 months we only played 11 ODIs. In 17 months, we only played 11 ODIs before the World Cup. From the last World Cup to this World Cup, we played 45 ODIs, most of which were played this year. Completely agree with that. But the point that's is, a shame. Yeah, that's a shame. I completely agree. It does make it improve, but that is our still next not ODI enough. is what, next year now? हाँ. By the way, तो अभी देखो कि आप उन लोगों को जिनके and I agree with right, जिन्होंने हारिस रऊफ ने 4 दिन तो खेला नहीं है, 4 डे तो खेला ही नहीं है, उसने तो 50 ओवर के गेम नहीं खेले, 10 ओवर 50 ओवर का भी नहीं खेला, जो 4 ओवर करा के बंदा बॉलर, जो देखो इसके his bowling variations are different in T20. He is not he hasn't played ODI. Same goes for that's the question, where is the bowling coach, where is the other coaching staff? कोच की नहीं है, कोच की बात नहीं है, कोई तो मेंटरशिप होगी ना जो कि प्रिपेयर करेगी। ये तो सबको पता है कि पाकिस्तान ने इतने वनडेज नहीं खेले। Mustafa, let me ask you this one question right now, right? You played tape tennis right now, right? You play BTCL, ठीक है, और कल को मैं तुम्हें बोलूं कि तुमने LPC also, ठीक है, LPC के लीग 1 के अंदर जाके तुमने MBC करनी है किसी की, राइट? और तो ये साहिर भाई की थर्सडे क्रिकेट में होता है MCA वाली, जिसमें MCBC होता है। ये खबरें तो पहुंच चुकी भी है। अच्छा ये पहुंची हुई है, रिपोर्ट्स प्रिंटेड है तस्वीरों के साथ, पहले बनाएंगे Mustafa, we will talk about that after when the recording is done. This is a very popcorn moment over there. And Farooq bhai, you should ask Ali bhai what happened there. But anyhow, coming back to the point, कि आप लोगों की आपकी फिजिकली आपकी बॉडी ने खेला ही नहीं है 3.5 घंटे बैटिंग करना और 3.5 घंटे फील्डिंग, 7.5 घंटे का गेम बेसिकली। हाँ
तो वो कंडीशन ही नहीं आपकी बॉडी, आपकी बॉडी कंडीशन भी बट ये बात है ना कि ये चीज फिर किसके कंट्रोल में? ये क्या बोर्ड नहीं सोच रहा हमारे मैचेस क्यों नहीं कराए जा रहे? वही तो ये कौन, मतलब समवन नीड्स देखो टू यार थिंक बोर्ड अबाउट पे इट, आप राइट? डाल दोगे ब्लेम, और बहुत हद तक बिल्कुल सही भी आपकी आपकी जिम्मेदारी हो, क्योंकि जो फ्यूचर जो टूर वाला एफटीपी वाला सीन होता है वो बोर्ड ही बना के देता है विद द या कंसल्टेशन ऑफ द कैप्टन, राइट, एंड ऑल. But if I am Haris Rauf and I am going into a World Cup, I know the World Cup is coming 6 months ago. 6 महीने पहले मुझे पता है, 9 महीने पहले मुझे पता है, साल पहले मुझे पता है. मैं, I will say, thank you very much. I will cut short my PSL. I will not go to any BBL bullshit. No, yaar, I need to fucking prepare. I go to my work. It's my job. I go to my job and I prepare for the meetings. I was like, एक मेरी meeting एग्जैक्टली आने वाली है. Let me prepare for this meeting. I don't So fucking एग्जैक्टली go on into that, जहाँ 5-5 मिनट की मैं मीटिंग में yeah. बोलता हूँ और मैं जाके एक प्रेजेंटेशन लीड करना शुरू So कर दूँ विदाउट एनी प्रैक्टिस. on that note, I just read today that Pat Cummings has said that he's not going to play PSL next year because he wants to prep for Ashes. There you go. ठीक है, There you तो go. देखो that's him Wait, did you say PSL prioritizing or IPL? IPL. IPL. Yeah, but he आईपीएल hasn't played IPL in 2 years though. He has हाँ, the लास्ट chance. ईयर में नहीं खेला. Last year He's नहीं also खेला. not going to उसका play तो next. आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट ही कैंसिल हो जाएगा ना अब तो. हाँ, लेकिन अब वो कह रहा है मैं नेक्स्ट ईयर भी नहीं खेलूंगा. ठीक है, लेकिन as a captain who's won the World Cup, you could say कि you only play for so many years. मैं जाऊँ पैसे बनाऊँ कुछ करूँ, but देखो his priorities are set. Yeah, but then Very at the clear. same time, there's a monetary factor in Pakistan players as well, right? Because Pat Cummins, I don't know his background though, but Haris Rauf come from a very, Yeah, so unprivileged background, I right? don't So think it's a great excuse, by the way. He's नहीं, made it. हाँ. He's made it now. ठीक है, no, he's जिस made it किस्म now, की but वो then गाड़ियों में जिस किस्म की वो गाड़ियों में घूमता है और जितने पाकिस्तान के एक्स प्लेयर्स हैं, फिर I'll तो tell you, कभी भी नहीं पाकिस्तान. इनफ नहीं है यार. फिर तो हाँ, कभी भी इनफ नहीं है. फिर तो लाइक व्हेन इज इनफ इनफ, कभी भी नहीं व्हेन इज होगा. इट इनफ. एग्जैक्टली, तो इट्स नॉट नेवर. इनफ. इट्स, और प्लस ये बताता हूँ क्या, अगर आपके अंदर इतनी अकल है, अगर आपको अपने करियर की अपने नाम की अपने ब्रांड की लॉन्जेटिविटी चाहिए, the only यस. way you can not be a forgotten brand is by performing in across different formats, and that's investing in yourself. If you're losing some money for now, you're investing in yourself, saying, you know what, ठीक है, एक पीएसएल छोड़ दूंगा या आधा पीएसएल बाद छोड़ में दूंगा, आपको बीबीएल. कोचिंग कॉन्ट्रैक्ट्स मिल जाएंगे यार उसकी बेसिस पे. if you're an accomplished test player, यस. post retirement आप उसके benefits या देखें ना. yeah, यार आप विद इन योर Farooq, करियर आप बेनिफिट्स लोगे. Farooq, आप विद nobody इन will करियर. think, nobody thinks about that 10 years from now, right? That's the whole हाँ. issue, Tahir भाई, कि हमारे प्लेयर्स इस तरह से क्यों नहीं सोचते? That's where the grooming शॉर्ट aspect टर्मिज्म. comes in. शॉर्ट टर्मिज्म, मायोपिक व्यू के हिसाब से जब आप चलते हो, आपकी राइट ग्रूमिंग नहीं कि भाई तुम्हें, जो शोएब अख्तर एक बात बार बार बोलता है कि भाई ब्रांड बनो. ठीक है, काइंड ऑफ फनी, बट उसकी उसकी जो बात है वो बेसिकली ये है कि आप एक ऐसा नाम बनो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में कि यार आपको लोग याद रखें. विराट कोहली और ये सब, इनके मुंह क्यों उतरे हुए थे हारने पे? क्योंकि यार उनको पता है कि यार व्हाट लेगेसी एम आई लीविंग. ठीक है, विराट कोहली कैन देन प्राउडली से कि ठीक है, आई एम द हाईएस्ट सेंचुरी स्कोरर इन द हिस्ट्री, बट बाय द वे आई हैव वन वर्ल्ड कप फॉर माय साइड, राइट? 2 वर्ल्ड दैट्स अ कप्स. क्रेडेंशियल. दूसरा और होता है टू ये वर्ल्ड उसमें. हाँ. सेकंड था, ठीक है, बट दिस वन वाज लाइक ही वाज इन अ मोर सीनियर पोजीशन, राइट? हाँ, So हाँ. or Rohit Sharma can say I captained that team, right? That's a big credential on his CV, right? That will make him a legendary player. हमारे प्लेयर्स इस तरह से क्यों नहीं सोचते? बीबीएल, मैं समझता हूँ ये बात कि लोग ये दूसरी सीरीज और ये बीबीएल वगैरह इसलिए खेलते हैं क्योंकि उनको अपने घर चलाने होते हैं, बट टू योर पॉइंट कि यार उनके पास ऑलरेडी है इतना कि दे चल कैन रहा है, एक्चुअली. घर चल रहा है भाई. घर या चल रहे हैं भाई. नहीं, घर भी भाई चल घर रहे हैं, सबके लेकिन चल रहे कॉन्सेप्ट हैं, but बुरे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं हालात यार. में नहीं है. there is another thing is also that कि जो आप विराट कोहली और रोहित शर्मा और इंडियन प्लेयर्स की बात कर रहे हैं, इंडियन प्लेयर्स की, राइट? हार्दिक पांड्या ले लो, केएल राहुल, all these people, right? I mean, for number one, of course, they have ये तो made कोई enough. खेलते भी नहीं है. हाँ, They have made enough. They only play for IPL and they play for Indian Yeah. cricket team. They don't play any other league though. Yeah, because They they're not make, allowed. they're not allowed to हाँ, because they signed a contract and whatever you want to call it, right? The thing is that they have and they do make enough money that they hire their own analytics of what we need to do in a certain situations and what as a PR or even at the games level. Each individual has their own person who's analytically thinking of each game that how they're playing. We are not spending that much money in Pakistan cricket team. We will probably have one analytics person who's handling the whole bench, the whole squad. the whole हाँ. squad. Right, so there's a big difference when it comes to that part. The monetary factor is Levels a huge हैं, factor. levels It's हैं. levels, हाँ. exactly, right? And the amount of money. Point being is that Haris, take Haris Rauf, take Shaheen Shah, maybe not so, but any other player, take it off, right?
They all have a tunnel vision. They don't look at it at 180 degrees. They don't look at 360 degrees. They look at a tunnel vision, 90-degree angle, where okay, fine, I am getting a contract for Sri Lanka Premier League. I'm getting a contract from Bangladesh Premier League, and they're going to pay me this much, and that's what I'm going to do. Oh, World Cup is 2 years from now. Fine, I'm going to start practicing a month before the World Cup. When the whole squad starts practicing, I'm not going to go out of my way just because I'm thinking 4 years from now I have to train myself for a World Cup. This is my personal observation. प्रायोरिटीज और प्रायोरिटीज It's सीरियसली priorities. बताऊं, अगर अगर इनकी प्रायोरिटीज वर्ल्ड कप में इस ओडीआई 50 ओवर वर्ल्ड कप में खेलना होती, जो कि आई एम नॉट ब्लेमिंग देम, ये नहीं कह रहा कि क्योंकि प्रायोरिटी थी नहीं, नल्ले थे, सब कुछ चल रहे थे, लेकिन अगर आपकी वो फोकस होता जो कि जो डिजर्व करता था, लाइक पैट कमिंस का कोई कोई क्या नाम है, बिल गेट्स का बच्चा तो नहीं है ना, वो उसने भी कहीं ना कहीं से पैसे तोड़ तोड़ के किया होगा काम। ऑस्ट्रेलिया में कोई कोई ऐसा नहीं है कि उसको कोई पे चेक मिल रहा होगा वहां से। अगेन, ऑस्ट्रेलियन बोर्ड इज ऑल्सो नॉट द रिचेस्ट बोर्ड इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो उसने भी प्रायोरिटीज क्लियर की, उसने बोला यार ठीक है, कम खेलूंगा लेकिन इफेक्टिव खेलूंगा और नाम बना के जाऊंगा मैं। और आप देखो, हिज ब्रांड इज लाइक एवरीवन वांट्स अ पीस ऑफ हिम, every brand would want a piece of him, every team would want a piece of him, और वो अपनी terms dictate कर सकता है when he wants to play, when he Yeah, doesn't but want he's content with his life and the amount of what the earning he's making, and I'm sure, to. He's done. and our team is probably not content with the amount of money they're He can making. stand with Alan Border, he can stand with Steve Waugh, he can stand with Michael Clark, he can stand with Ricky Ponting, and say, fuck that, I did what you did. Yeah. I did exactly what you did. No, but even if So that's yeah, the I mean level. that's one thing, right? His commitment is different. His priorities are different, and I think Australians' mindset is different. There's no comparison between them and us. I don't think so. Because even if Pat Cummins does not come from a Bill Gates family, but at the same time, I don't think so that he came from the streets or like a uh, झोपड़पट्टी from Australia, right? I think one thing I've also noticed in Australia specifically, because I'm obsessed with their cricketing जो कल्चर है उनका। I'm literally, मैंने उसमें बोला था ना कि I'm trying to look at this, why is this happening, how can a team be so dominant yet not that good। तो उसमें एक चीज मैं एक एलिमेंट में देख रहा था कि जो कि आई फाउंड रियली इंटरेस्टिंग इज दैट ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट इज लाइक अ सेकंड और थर्ड स्पोर्ट, इट्स नॉट इवन लाइक द कोर Yeah. स्पोर्ट। उनकी रग्बी है, उनकी फुटबॉल है, उसमें ज्यादा वो हॉकी पैसे है वैसे, भाई, Hockey है. हॉकी हॉकी है। है, हॉकी है। तो दिस इज नॉट इवन लाइक, अभी ये लोग मजाक मजाक में, आई डोंट नो, वो जो क्रिकेट द ग्रेट क्रिकेट पॉडकास्ट है वो मैं फॉलो कर रहा था थ्रू आउट द वर्ल्ड कप। These guys were like literally laughing, कह रहे थे यार कोई आधा ऑस्ट्रेलिया तो उठ के देख भी नहीं रहा, वर्ल्ड कप चल रहा है दुनिया में, and here we are in the finals, and here we are, we won it। तो आई थिंक अनदर एलिमेंट ऑफ इट इज कि जो अब जितनी सारी ये जो कंट्रीज हैं जिसमें ना कुत्ते की तरह नोचने को दौड़ते हैं, इंडिया और पाकिस्तान, उसमें एक और रीजन ये भी है कि देयर इज नो अल्टरनेटिव। पीपल आर ऑब्सेस्ड विद दिस वन स्पोर्ट, जिसकी वजह से वो जो प्रेशर क्रिएट होता है, एंड प्लेयर्स इफ दे कांट हैंडल इट, दैट दे कांट हैंडल इट, बट एट द सेम टाइम द प्रेशर दैट दे आर फेसिंग इज आल्सो नॉट समथिंग दैट अदर टीम्स फेस। इंग्लैंड में वो प्रेशर नहीं है, न्यूजीलैंड में वो प्रेशर नहीं है, साउथ अफ्रीका में वो प्रेशर नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में वो प्रेशर नहीं, और दैट प्रेशर इज बिग। इट्स नॉट लाइक आप उसको डिस्काउंट नहीं कर सकते कि कॉन्स्टेंटली मीडिया आपको दिख रही है, कॉन्स्टेंटली आपकी हर मूव को वो हो रहा है, कॉन्स्टेंटली आप पे जीतने का इतना बड़ा प्रेशर कि एवरी टाइम यू प्ले वर्ल्ड कप यू आर एक्सपेक्टेड टू विन द फकिंग थिंग, देयर इज नो लेस थिंग। तो आई फील लाइक कि ये भी एक फैक्ट जरूर होगा जो कि आपकी मेंटालिटी को फक कर देता है इन एनी huge event where you go into a game and you almost thinking about कि भैंचो कितने जूते पड़ने वाले हैं अगर मैंने शॉट सही नहीं खेला, या मैंने आज कुछ अगर भड़ मार दिया या कुछ हो गया। तो ऑलवेज थिंक ऑस्ट्रेलियन डोंट गिव अ फक। इतना उनका वो होता है ना कि आपको उनकी शक्ल से दिख रहा होता है कि दे डोंट गिव अ शिट। यानी को कैप्टन बोल रहा है कि हाँ 1.5 लाख होंगे 100 वाट, वो चुप करा देंगे, उनको पता नहीं है। फक। They और are उसने कोई mentally ऐसा नहीं very बोला था कि strong. यार That's वो they're mentally प्रेशर, very strong. वो प्रेशर, लेकिन जो वो mental प्रेशर है ना, वो mental हमारे strength ऊपर तो इतना exactly है नहीं। हमारे यहाँ वो टाइम तो चला गया जब प्लेयर्स उतरते थे तो उनको जूते पड़ते थे और अंडे पड़ते थे and all that shit। अब वो चीज That अब टीवी तो पे आ हमारा गई वो है। हो गया ना कि right? अब वो तुम टीवी पे जीतो आ या गई हारो हम तुम्हारे साथ, वो वाला सीन। हाँ, लेकिन that pressure is way more on India, by the way, ठीक एब्सोल्युटली है। इट और इज, बट पाकिस्तान बांग्लादेशी पे भी फैंस तो बेचारे, I don't think वो लाइक उनका बनता भी they नहीं actually, है, हाँ, ऑल ड्यू they actually रिस्पेक्ट। should have zero pressure, ठीक है। हाँ, क्योंकि कोई जितना उन्होंने एक्सपेक्टेशन। डिसअपॉइंट किया हुआ है और उनके फैंस उनसे इतने तंग हाँ, आए हुए हैं, आई एम श्योर, तो उनके ऊपर तो वो प्रेशर है ही नहीं। let me draw another comparison, और मुझे लगता है कि ये रीजन है कि why Australians are so mentally tough, or even the English players, by the way, and you'll see, you know, England will come out of this situation. England cricket before 2015 was in shambles, ठीक है। They've yep, turned it around and they've made it what they are today, ठीक है। right, Let me draw another comparison. हमारे प्रोफेशन में जेब क्या होता है?
when you become a partner, क्या होता है? ठंड मचाते हैं, ठीक है? यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे in the sense when the US partner में, needs to go ठीक and है? get the business here. oh अच्छा यहाँ पे basically उनकी life They शुरू होती basically है are a glorified manager, ठीक है? yes They work, ठीक है? And I think that work culture, हमारे यहाँ क्या है कि once you reach there, you're there basically. You're set for life. हाँ Whereas just if you look at the socio-economic structure, उनकी फट जाती है। वो उन्होंने उतना ही बड़ा घर मॉर्गेज पे निकाला होगा, उन्होंने उतनी गाड़ियां मॉर्गेज पे निकाली होंगी, and they have to pay their bills for the rest of their lives to maintain that living standard. Whereas you're there. पाकिस्तान में there's no property taxes, there's nothing. आपने ऑडी ले ली, ये ले लिया, वो ले लिया, that's your car forever. You don't have to worry about it. Everything is based on. I mean, it's a very weird comparison, but let me put it this way: our players, they get into a comfort zone, and they're there forever for the rest of their lives. Take care. And these guys have to hustle and hustle and hustle for the rest of their lives. And I feel like just that work ethic is completely different. You know, you can't draw that comparison at I all. agree. They have to work hard for the rest of their lives to keep that living standards. हमारे वाले जहाँ पहुँच गए वहाँ पहुँच गए, and they're going to retire that rich basically. ठीक है? तो I think हमारे यहाँ होता है कि यार बस नौकरी मिल जाए, 35 में सेट हो जाऊं, उसके बाद फिर ठंड में जाऊंगा। यही माइंडसेट है ना? ठीक है? दूसरी बात एक और मैं आपको बात बोलूं, अपने से बात बोलना फर्क कि outside of cricket, right? So when I watch cricket on the World Cup things, I watch it on the IPTV के, जो मैं ऑस्ट्रेलिया के चैनल में देखता हूँ, so I don't want to watch the local Indian advertisements and commercials and whatever, right? So you look at PTV and A Sports से आ रहा होता है, right? All the advertisements that are coming, जिसमें हसन अली आ रहा है या नसीम शाह बॉडी आ रहा है, they're basically brand ambassadors of certain brands. बाबर आजम क्लिनिकल्स का है, फलाना उसके एड्स आ रहे हैं, पेप्सी के हैं, फलाना। इंडिया में सेम थिंग, राइट? MRF के अंदर विराट कोहली आ रहा है, तो ब्रिल क्रीम के एड के अंदर विराट कोहली, सॉरी रोहित शर्मा आ रहा है, फलाना ढमकाना आ रहा है, राइट? यू लुक एट ऑस्ट्रेलियन, उनके एड्स के अंदर आई हैव नेवर सीन एन ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर presenting. They probably don't even make it. इंडिया में जाके ऐड करते हैं वो तो अपने मुल्क में ऐड नहीं मिलता है, सोचो। So going back to that point, like they're not getting that extra outside of revenue or money or income, whatever you want to say it. And I absolutely agree with Farooq that they are literally working hard. The paycheck they probably get is from Australian Cricket Board and BBL. I read about Chris Gaines, and post retirement he decided not to pursue a career related to cricket, and he actually drives a truck. Yes. ठीक है? हमारा कौन सा एक्स क्रिकेटर है जो ट्रक चलाता है, मुझे बताओ। मर जाएगा वो, ट्रक के नीचे आके मर जाएगा, लेकिन ये नहीं करेगा। और वो क्या आरआर क्या करेगा? वो आरआर ये करेगा, हम स्टार्स हैं, हम। अबे भाई, you're like any other profession by the way. I don't know, like, और ये जो हमारे यहाँ नैरेटिव है ना, वो मैं आर्टिस्ट हूँ, मुझे अबे तू आर्टिस्ट है तो क्या उखाड़ रहा है भाई? ठीक है, you're like any other profession. मैं बोल रहा हूँ, आप फाइनेंशियली रिस्पांसिबल हो ना, आप अपने फाइनेंस के लिए खुद रिस्पांसिबल हो। you're an artist, आपने आर्टिस्ट बन के मुल्क पे एहसान थोड़ी किया, और मैंने मुल्क का नाम रोशन किया। You reaped benefits, but you got paid for it, so thank you very much. paid for it. And and I mean 1999 के World Cup के अंदर the player of the tournament was Lance Klusener. The guy after retirement is actually a fish farmer. He farms fish. I'm not surprised. You have to do a normal day's job after you're retired. It's not simple. इसमें जो ये वाली जो बात है ना, देखें, जो एडवर्टाइजमेंट्स की एंड ऑल ऑफ दैट, कोई इशू नहीं है भाई, कर लें आप, कोई मसला नहीं है। बस प्रोड्यूस द रिजल्ट्स, आप रिजल्ट प्रोड्यूस करो, रिजल्ट ओरिएंटेड बनो, डू द राइट हार्ड वर्क, विन द गेम्स फॉर द कंट्री, प्रूव योरसेल्फ, एंड देन करें जो भी एडवर्टाइजमेंट डील्स वगैरह आपने करनी, दैट्स नॉट एन इशू। बात जो आपकी है ना, वो ये है कि यार ये जो कौमी मेंटालिटी है कि भाई टू गेट इन द कंफर्ट जोन एंड देन ये अब मैं नंबर 1 टीम। अब बाबर आजम ने अपनी जो पोस्ट पब्लिश की, उसमें क्या लिख रहा है कि मैंने पाकिस्तान को नंबर 1 ओडीआई टीम बनाया। ठीक है, आप सबको पता है कि ये रैंकिंग आईसीसी की कितनी स्टूपिड है। वी नो हाउ दीस कम ऑन। अब ये नंबर 1 तो बन गए, ठीक है, दैट्स फाइन, बट हमने किन साइड्स के अगेंस्ट खेला, कौन सा, और उन मैचेस में भी बाबर आजम ने इटसेल्फ कौन सी मैच विनिंग इनिंग खेली। यार अब देखो ना, जब भी आपके पास कोई बेंचमार्क नहीं होगा ना विद इन द टीम, अगर आपके पास कंपटीशन नहीं होगा ना, यू विल नेवर वर्क हार्डर देन बिफोर। लाइक कोहली को देखो आप, हु इज ही कंपीटिंग अगेंस्ट? हर दूसरे दिन नया बंदा आके खड़ा हो जाता है, ठीक है? शुभमन गिल, रोहित शर्मा, आई मीन देयर इज so many different people around him जो कि उससे, आई मीन, बेहतर तो कोई भी नहीं है, बिकॉज़ ही इज ऑलवेज
was you know, ready to stay. take his Yeah. spot. Yeah. Not better, but they're ready to take his हाँ, spot. कह रहे हैं यार आप जैसे ही बैठोगे हम तैयार हैं. but he never Yeah. let them do it, because then that strived him to keep working harder and harder and harder, and you know, he maintained that spot, that he's still the best, but he works really hard for it And as going well. back to our But I initial think discussion, देखो कि यहाँ हम ये सोचते हैं यार हमारा ओपनर कौन है, अगर ये बाहर चलेगा दूसरा कौन आएगा, फिर अभी took us like a few minutes to realize कि इमाम एंड शफीक के बाद हमारा ओपनर, ओह अच्छा शान मुशूब भी हमारा ओपनर हो सकता है. no, that is true. बेंच ही नहीं है हमारे पास. बेंच स्ट्रेंथ तो खैर आप बात ही ना करो. लेकिन इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट. मैं इसी बारे में सोच रहा था कि जो सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, और प्लस मुस्तफा ने भी वो बोला कि एक हमें कंफर्ट जोन में जाने की एक जल्दी है. वो बताऊं किस मुझे जैसे लगता है कि वो आ किस क्यों रहा है. बिकॉज आई ट्राई टू पुट माई सेल्फ इन दैट पोजिशन, राइट. कि आप जो है ना, यू ट्राइंग टू मेक इट, यू नो, यूर लिविंग ऑफ स्क्रैप्स. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल हम ऑडिट फर्म की लाइफ की बात कर रहे हैं कि लिविंग ऑफ स्क्रैप्स आपको बिल्कुल एक बेसिक स्टाइपेंड मिल रही है, and आप चाह रहे हैं किसी तरीके से कुछ ना कुछ पैसे जमा कर लें, ये कर लें, वो कर लें. द मोमेंट यू गेट अ 70K जॉब या 80K 90K, आपको लगता है कि हाँ बस अब सुकून से आराम से जिंदगी गुजरेगी. एंड देन यू बेसिकली आपकी जो लेवल ऑफ सक्सेस है या आपकी लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है, इज कनेक्टेड विद हाउ मच मनी यू मेक. एंड दैट really that's causes some people to lose the focus on the actual job, basically the profession. तो मुझे लगता है कि जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका में आई फील प्लेयर्स को मिलती है गोइंग अप टू द फर्स्ट क्लास या फर्स्ट टीम इज वे मच मोर स्टेबल, क्योंकि फॉर देम मेकिंग मनी इज नॉट लाइक एन इशू. फॉर देम इट्स नाउ प्लेइंग द स्पोर्ट, क्योंकि वो कह रहे हैं पैसे तो आ रहे हैं, पैसा तो मस्त घर चल रहा है, सब कुछ सही है. और प्लस वो दूसरी वाली बात ये भी है क्योंकि कोई शर्म और हया नहीं है कि अगर वो और जॉब भी कर रहे हैं, उनको कोई उसमें कोई आर नहीं आती ना, उनको कोई ऐसा कोई लगता है ना, उनको सोसाइटी कुछ बोलती क्या है इतना बड़ा, ये क्या तू क्या कर रहा है. तो बट एट द सेम टाइम दे leading up to their debut, they haven't really, it's not about money for them. Money is a factor in everyone's life. कोई सारे affluent घरानों से नहीं आ रहे ऑस्ट्रेलिया में जो खेल रहे हैं या न्यूजीलैंड में जो खेल रहे हैं, but they're getting paid, getting paid normally. इनके फर्स्ट क्लास स्ट्रक्चर में सेम थिंग आपने नोटिस किया होगा पोस्ट 2007, सॉरी प्री 2007, इंडिया टीम was all over the place. The whole structure was all over the place. इनका एक चेयरमैन जा रहा है, दूसरा चेयरमैन आ रहा है, similar to where we are. Money was not as much as it was before, but now you see कि उन्होंने अपने स्ट्रक्चर में इतना पैसा डाल दिया है कि उनका प्लेयर खुश है. So now they just Yeah. play the sport for the sake of the sport. They कहेंगे अब हम यहाँ पर एक स्पोर्ट खेलने हैं, अब हम प्रोफेशन अपने ज़्यादा फोकस करें instead of making money, instead of looking for ads, instead of looking for मैच वो मस्ती का चौका, ये वो सारी बचौदियाँ, ये सब चीजें is it becomes like, you know, they don't give a shit about those things because they're already, उनका पेट भर चुका है. ठीक है. And I feel like कि हमारे players भी, going back to Farooq's point, कि जो एक मरतबा आप सेट हो जाते हैं ना, पार्टनर बन गया, फर्स्ट टीम में आ गए, अब उनको बोला बस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, इसका मतलब 2.5 लाख क्या 5 लाख आ रहे हैं हर महीने. ग्रेट यार, 5 लाख की सैलरी, दैट्स इट, गुड. जल्दी से अच्छा से गाड़ी लो, डिफेंस में कर लो, गार्ड रखो, एक ड्राइवर रखो, यार और हमारे सेट यहाँ करो. ना सेब, अगर आप एक दो घर बना लें और 2-4 प्लॉट ले लें और 2-4 Oh, done, कमर्शियल बिल्डिंग्स ले लें ना, you're done for life, done, by the way. you're ठीक done. है. Yeah. In a capitalist environment, it doesn't work that way. I mean, Yes. even though your paycheck looks so much better, you're only Still a lot to do. always 6 months away from bankruptcy as well at the Yeah. same time. Yeah. ठीक है. Absolutely. Not the case in a third world country, by the way. ठीक है. So if you know आपने 2-4 घर बना लिए, there's no property taxes उस तरह से, और कुछ भी नहीं है यहाँ तो 1.5% property taxes होते हैं, and you know there's other stuff. So you need that working capital to keep going. ठीक है. And that is what keeps you going. That is what keeps you going all the time in this environment. You know, this, whatever you call it, the capitalist mindset or the capitalist economy or whatever. Even though you can touch so much more facilities and you can do so much more with the money, but you can only do it if you have a job. Okay? If you don't Yeah. have a job, you'll basically go bankrupt very soon. Okay? So I think it's just some of it has to do with that work ethic. और वहाँ रहते हुए वो work ethic सिर्फ इसलिए नहीं आती कि you just get in your comfort zone and then you're You set take for things for life. granted. You देखो take ना, things for granted. अब That's ये what it देखो is. ना, ये मोहम्मद हफीज एंड ऑल, आई मीन देखो आप लोग, आई डोंट नो जानते हो नहीं जानते, बट इनके बिल्डर है ये. ये बिल्डर्स हैं भाई.
ठीक है, ये सिर्फ बातें ही हैं कि सचिन के पास इतना पैसा और उसके पास आई एम श्योर, ठीक है, उनसे कमी है तो वो इनके पास, बिल्डर नहीं है लेकिन वो, लेकिन बिल्डर वो नहीं है बिल्डर सचिन। भी नहीं है भाई। हाँ, वो बिल्डर भी नहीं है, ठीक है। वो अभी ये शोएब अख्तर जो हाउसिंग स्कीम बना रहा है, ठीक इज ही है, ओ यस, इट्स ह्यूज, सीरियसली? इट इज ह्यूज। ये जो सहवाग बातें करते हैं ना कि वो इनको पैसे चाहिए, अबे भाई तेरे उनके पास शिट, दे हैव सो मच मनी, सहवाग हैज नो आइडिया। उनकी गाड़ियां देखो यार, ठीक है, सेट है they're भाई। probably 10 times more expensive. Those cars are 10x more expensive to buy in Pakistan, by the way, ठीक है। Oh yeah, because they buy cash, Yeah, they buy cash and then they're वैसे भी imported. expensive, हाँ, those duties and all, they're very expensive. So, and they're set for life and beyond, by the way. So they're तो I good. think yeah, I think underlying जो issues हैं they're much more serious and they're, which is why I feel like कि थोड़ा सा अगर प्लेयर सेल्फ अवेयर हो जाए ना और वो कह रहे कि यार यू नो व्हाट, आई नो द सिस्टम अराउंड मी सक्स, आई नो कि यहाँ पर कोई किसी की हेल्प नहीं करने वाला, मेरे पास कोई एनालिटिक्स टीम नहीं होगी, लेट मी गो हायर यू नो एन एस्पायरिंग कॉलेज ग्रेड, उसको मैं एक नॉर्मल सी सैलरी देता हूँ, उसको अपने साथ यू नो सम दीज थिंग्स, दीज आर लाइक दोस corners you have to cut if you really want to make it in this industry, if you really want to be remembered. So if I was Haris Rowe, if I was सायम अयूब और whatever, मुझे अगर फॉर एग्जांपल अगर मुझे 2 लाख की एक मैच फी मिल रही है, या मुझे एक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में 80,000 या whatever जो भी इनका सी ग्रेड में डी ग्रेड में जितना भी मिल रहा है, मैं उससे कुछ परसेंटेज करूंगा यार, आई विल इन्वेस्ट इन अ ट्रेनर जिसको मैं अपने साथ रखूंगा, अपना यार तुम ऑन्टोरॉज बनाऊंगा मैं, और ये मिल देख जाता है लो, यार, सस्ते में मिलता है। तुम सिर्फ ये देख लो यार, इनके पास काम क्या है सिवाय ट्रेनिंग करने के? काम क्या है? इनमें से कौन है जिसने अपनी पर्सनल डेवलपमेंट पे खर्चा किया हो? Okay? मैं ये नहीं किया कहता हुआ? कि अंग्रेजी बोलना कोई स्टैंडर्ड, आई नहीं डोंट नहीं वांट नहीं टू गेट नहीं, इनटू वो दैट उसकी थिंग, बात नहीं इट्स कर रहा। नॉट अ मेजर ऑफ इंटेलिजेंस, इट्स नॉट अ मेजर ऑफ एनीथिंग, बाय द वे, ठीक है। बट हाउ मेनी ऑफ देम हैज एक्चुअली, यार कितना मुश्किल है, By 6 महीने में आप एक नई लैंग्वेज सीख लेते हो पूरी हाँ, की पूरी, ठीक है। हाउ मच ऑफ योर मनी हैव यू यार स्पेंट ऑन योर ओन सेल्फ टू like लुक Zaid mentioned, presentable? right? Hire someone out of college, 6 months. उसको बोलो भाई देखो बात सुनो, हमारा ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच है, तुम्हारा काम ये है कि मैं हारिस रऊफ हूँ, तुम्हारा काम ये है कि 3 टॉप हाँ के बैट्समैन उनके निकालो जो ओपनर्स हैं, और मुझे 10 साल में बताओ कि वो किस तरह आउट हुए हैं और क्या उनके वीकनेस है, हाँ, और और मुझे बस मुझे बताओ, ये मुझे बताओ, और मुझे मुझे मैचअप ये बना के बताओ, दो, मुझे पूरा मुझे पूरा बना मैचअप के बनाओ। दो। आई मीन आई डोंट थिंक उसमें कोई उसको साइंस साइंस नहीं नहीं है, है। they इससे भी just have to watch fucking हाँ games। हाँ यार इससे भी पहले पास्ट में अगर आप देखो ना, जब वसीम अकरम वकारी यूनुस हो गए, ये भी कोई अंग्रेजी अंग्रेजी इनको नहीं आती थी, मीडिया नहीं आती मैनेजमेंट थी। कुछ नहीं आती थी, दे लर्न राइट। एंड इनका जो बेसिक मुझे लगता है, जो मुझे समझ में आता है, वो ये है कि इनकी जो सराउंडिंग में जो लोग थे ना, दे कलेक्टिवली इन्फ्लुएंस्ड, राइट। दे यूज्ड टू फॉलो इमरान खान, राइट, यूज्ड टू हाँ, फॉलो द स्किपर, so see, कि he यार was a role फॉलो तो model. बात ही है, वाज they द played रोल with them, मॉडल, they राइट। played with him. हाँ, एग्जैक्टली। और एंड दूसरी देन चीज ये है एक कि they were gifted also। I I think ये think हम they were बहुत street smart. गिफ्टेड डिस्काउंट They भी were कर रहे हैं। हैं। street smart. और यार अभी जो भी प्लेयर है वो मैं उनको भी स्ट्रीट स्मार्ट कहूंगा। आई मीन साइम अयूब लाइक अ लेकिन they're नेचुरल not the They're same not level the of same level gifting। of बट gifting, right? You can't compare but the point Shaheen is Shafridi to but Wasim or Wakar. There's no हाँ, you comparison. but can't। the point is yes, but the point is कि अगर एक यंग बच्चा हमारे पास है, अगर हम उसको राइट सेट ऑफ एनवायरनमेंट दें, भाई वो कहते हैं ना कि यू आर द एवरेज ऑफ द 5 टाइप ऑफ पीपल यू स्पेंड टाइम विद, राइट। सो अगर वो सही लोगों की सोहबत में रहे, उनको लीडरशिप एक्सपोजर मिले, राइट, आई थिंक these people can become, these तो players can मेरा become वही आर्ग्यूमेंट professional है players। कि ये जो तुम बोल रहे हो, क्या उसको ये बात नहीं पता होगी, सायम को ये बात नहीं पता कि मैं 5 बंदों का एवरेज में हूँ? I don't think so. नहीं पता सबको होगा, I don't पता है। think so. ये नहीं तो I पता don't होगा। think so. ये तो एक नहीं. ये तो एक आम सा मुहावरा है ना कि खरबूजा खरबूजे को देख रख मत है, सबको पता है। ये But तो I कोई don't ऐसी think चीज so. नहीं है कि जो पढ़ लिख के बात नहीं I don't think so. They're putting pen on paper on those situations. एग्जैक्टली, सो दैट्स व्हाट आई वांट कि कोई कहीं ना कहीं समवन हैज टू ब्रेक दैट ट्रेंड एंड से यू नो व्हाट, लेट मी टेक केयर ऑफ माय शिट। देखो पाकिस्तान हम सब पाकिस्तान से उठ कर आए, कोई हमें पाकिस्तान में कोई ऐसी सिचुएशंस नहीं मिली कि जिसमें हम कहें कि यार हमें पूरा राइप एनवायरनमेंट मिला। अभी मैं किसी इंडियन दोस्त से बात कर रहा था ऑफिस में, यार उसने अपनी पूरी यूनिवर्सिटी की फीस उसने क्या कहते हैं, इंडिया से लोन लेके भर दी उसने, लाइक बहुत चीप इंटरेस्ट रेट पे। तो उनको एनवायरनमेंट कुछ ना कुछ सपोर्ट मिल जाती है, हमें वो भी सपोर्ट नहीं मिलती, लेकिन वी ऑल somehow we you know देखो वो तो we all made of it, us, every single one of us made it against odds the odds। basically, So ठीक है। that's what I'm saying कि no one's हाँ, out there to look for you, now you have to fix, like आपको नहीं, आपको आईसीसी से या आपको पीसीबी से कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, आपको कोई कैप्टन इमरान खान से कोई इमरान खान नहीं मिलने वाला, अब आपको आपके पास कोई वसीम अकरम नहीं वाला। सो इफ आई एम साइम अयूब, इफ आई एम शाहीन शाह एंड हारिस रऊफ, आई शुड बी थिंकिंग, आई शुड बी नॉट क्या है, मुझे बोर्ड सपोर्ट करेगा, मुझे बताएगा कि ये एनएल, फक दैट शिट मैन, हर चीज अब कंप्यूटर पे आ चुकी है।
आपके palm of your hand, you meet with these, you know, आप BBL जाके खेलते हो, क्या वहां पर आपको दिखते नहीं होगा कि ये लोग क्या कर रहे हैं? Yeah. लिटरली यार, हाँ लिटरली, आई मीन Yeah. आप आपकी आंखें एनालिस्ट बंद है. आपको जो फीडबैक देते हैं, Yeah. why can't you incorporate that Why feedback? can't you incorporate? And in आपको हर fact, तरह Yeah. का and in access तो fact, मिल रहा I'm है. sure they're exposed to it also. By the way, the problem with Yeah. Pakistan is, you know, having a system and then keeping it around when those people are gone, right? Yeah. So Right. you've And had then foreign coaches, right? I'm sure they use all those systems and all. Do you implement them? Do you take it from them and implement them in your lives after they're gone? Probably not, right? And I think that's where the problem You is. move on and you change things. Like आपने वो वसीम खान जब आया था उसके आते ही आपने like उसके सारे plans आपने बदल दिए as if like it's ego की बात चल रही है. Yeah. It's so stupid. So stupid. कि आप यार एक चीज को चलने दो, फिर उसका रिजल्ट आप एनालाइज करो, रिजल्ट अच्छा आपको पसंद नहीं आया, ये then you जो change. पाकिस्तान में एक और चीज है ना कि आप किसी से भी बात करो, वो आपको एग्जांपल देते हुए बोलेगा यार वो हमारे टाइम पे ऐसे होता था. मैं कहा यार, लाइक व्हाई डज इट हैपन दैट व्हेन समवनस लाइक रिमूव फ्रॉम दैट पोजीशन एवरीथिंग चेंजेस ड्रास्टिकली, राइट? Right. चीजें एकदम बहुत फिट बंदा कहीं पे आ जाएगा, लाइक कहीं भी, लिटरली कहीं भी, एनी हाँ डिपार्टमेंट यू टेक, लाइक इवन लाइसेंस ऑफिस में, ठीक है, हाँ यू गो यू गेट योर लाइसेंस, बहुत ईमानदार ऑफिसर आएगा ना, यू विल सी के रिश्वत भी बंद हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ इंसान के बच्चों की तरह चल रहा होगा, हाँ. and then that person leaves and everything's like back to, Even worse it's a chaos, situation than it was it's a before. chaos. हाँ हाँ, फिर वो कुत्ते की तरह खा रहे हैं फिर से, ठीक है, हाँ. तो Hmm. it's just, चलें it's इस पे मैं because there Yeah. is no system, right? So the absence of that, what happens is people have so much room to implement what they want, and when they do it, it's fine, and when they're gone, it's back to square one and even worse, to your point. तो इस पे एक बात भी मैं करना चाहूंगा कि लेट्स से यू आर ट्रैवलिंग इन एन एयरप्लेन इन पाकिस्तान and all of a sudden you realize that Saim Ayub is actually in the same airplane and he's also economy class, right? And it happens to be that he's sitting right next to you. What are some of the things that you would tell him, given like obviously your experience and a third person view, कि भाई क्या करे वो कि मैं कहूँगा like यार टीम बनाओ, अपनी टीम अपनी बनाओ, टीम बनाओ. चीप आउट ऑफ Yeah. कॉलेज लड़के उठाओ, स्मार्ट बंदे कराची में पाकिस्तान में स्मार्ट लड़के मौजूद हैं, स्मार्ट बच्चे मौजूद हैं. आप अपनी टीम बनाओ, एक पीआर ठीक है सही है जो आपका मीडिया हैंडल करे, बच्चों को दो, डोंट गिव इट लाइक फकिंग एजेंसीज जो स्टेपल मैसेजेस निकालते हैं. एक अपने एनालिटिक्स का बंदा रखो जो आपकी सिर्फ बताए कि यार आपकी वीडियोस देखे, उसका काम है सुबह शाम आपकी वीडियो देखना. ही डजंट गिव अ शिट अबाउट Yep. पाकिस्तान, ही डजंट गिव अ शिट अबाउट द आपकी बस वो आपसे ऑब्सेस्ड होगा, वो आपके Your वो हर शॉट्स strengths, को एनालाइज करेगा, weaknesses, आपके everything. everything everything. He should give you like before every tour, every innings, every game, he should be giving you like ये बॉलर आएगा और ये तुझे यहाँ बॉल करेगा, नहीं खेलना, ये तुझे ये बॉल देगा, ये इस तरह का. दैट अगेन, यहाँ आप एक इंडस्ट्री भी बनती है इससे, और आपको इतना पैसा जरूर मिल रहा है कि आप उनको पर सीरीज फॉर एग्जांपल 50,000 रुपए दे सकते हो मसलन, या लाख रुपए दे सकते हो. बट अगेन दैट शुड नॉट बी, आप उसको मॉनेटरी बेसिस पे ना देखो, आप देखो कि यार ये मैं लगा रहा हूँ उसको, आई एम गोना बी अ बेटर It's your प्लेयर return बिकॉज on ऑफ दिस. investment on your performance, basically. yeah. ओ 1000%. अपनी टीम बनाओ, डोंट लाइक इमेजिन कि देयर इज नो बोर्ड. यार इतने गरीब मुल्क हैं, ये इराक है, ये अपना यू नो ये लोग वर्ल्ड कप में वर्ल्ड कप कैसे खेल लेते हैं, फुटबॉल वर्ल्ड कप, और अफ्रीकन टीम्स कैसे वर्ल्ड कप खेल लेती हैं, बिकॉज और अच्छा खेलती है. हाँ. अच्छा खेलती हैं, कैमरून दे को ले लो, कम्पीट. सेनेगल को ले लो, जिनके पास खाने के कैसे ये क्या इनके पास हाँ खाने के पैसे नहीं है सीरियसली, लाइक Literally. उनके 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 पास कोई स्ट्रक्चर्स नहीं बने हुए कोई बहुत बड़े बड़े, उनको ये पता लग गया है कि भाई भाई देखो पैशन है, टैलेंट तो है और हमारे पास, पैशन है बस. पैशन है. अब ये है कि अब मुझे अपने साथ जो मेरे साथ अराउंड जो मेरे रिसोर्सेज उसको कैसे यूज करना है. तो वो आप इमेजिन करो कि आप केनिया से खेलते हो क्रिकेट, आप मालदीव्स के प्लेयर हो, आपको कोई बोर्ड नहीं मिलने वाला, आपके पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, नाउ यू आर द वन पर्सन, आपको पैसा मिल रहा है हाँ बोर्ड से, बस उसको आप डिवाइड करो. इट्स बेसिकली इट्स लाइक अ कंपनी, राइट? यू रन अ कंपनी एंड यू से दिस इज माय इनकम, दिस इज हाउ मच आई एम गोना गेट पेड, दिस आई एम गोना स्पेंड ऑन वेरियस अब इंटर का एक्सपेंसेस. बच्चा बताएगा मुझे और मैं फिर बैटिंग कैसे करूंगा, ये भी हो सकता है जवाब ऐसे बेहतर है. ये भी तो हाँ. होता, हाँ ये भी होगा मैं कसम खुदा की. अच्छा नहीं इस पे वो खुद आप इंटर बाहर में. जाओ, आप यूके में जाओ, आप यूके में जाओ, इस तरह की यूनिवर्सिटीज में बहुत सारे स्पोर्ट्स साइंस पढ़ रहे हैं वहां पर लड़के पाकिस्तानी. Hold on, hold on. आप वहां से उठाओ. Let's मेरे अपने घर की बात. Zarek went to LSU to learn sports statistics and sports analytics. ठीक है? बहुत सारे लोग ऐसे हैं, राइट? yeah तो exactly it's a field yeah लेकिन अच्छा मैं साइम को शायद अगर मेरे बराबर में बैठे तो मैं शायद एक दो बातें आप बोलेंगे studies अग्रेसिव खेलो यार, आप थोड़ा बोलेंगे सा यार निकल. उठो यार, निकलो ऐसे. मैं वैसे अनवर अली से मिल चुका हूँ, पहले अनवर तो अली आप से हाउ मिल डेयर चुका यू. हूँ, लेकिन बात नहीं हुई मेरी उससे. लेकिन साइम से मैं ये ये अनवर अली पहली से बात मिल कहना चुके हैं लेकिन चाहूंगा बात कि नहीं यार हुई है.
बाद में भाई स्टार्ट हाथ मिला के वो मैंने बंदा निकल मैंने गया और बस, शाहनवाज लेकिन धानी वो ने पीस साइन मारा था। मुंह में पान था उसके, साहिर तो भाई उसने मार दैट्स द रीजन व्हाई ही इज नॉट इन द साइड नाउ। वो साइड में वाकई में यार। तो मैं ये कह रहा था कि whatever happened to him. हाँ अनफॉर्चुनेट बट पहला पॉइंट मैं उसको ये कहूंगा कि यार फर्स्ट ऑफ ऑल आई फील लाइक यू नीड टू हैव गोल क्लैरिटी। अपनी जिंदगी में अपना गोल क्लियर करो कि भाई हाँ तुम यहाँ पर ठीक है, पैसा इज अ थिंग दैट विल कम। वो जो 3 इडियट्स में कहते थे ना, पैसा खुद ब खुद आएगा, एक्सेलेंस पे फोकस करो, हाँ समथिंग हाँ लाइक दैट, राइट? यू नीड यस टू बी यस क्लियर कि भाई तुम्हारी जिंदगी का गोल क्या है। यू नीड टू बिकम द बेस्ट प्लेयर एवर इन द हाँ हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट, राइट? बस नाउ अब उस तक पहुंचने के लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं, बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं दैट यू नीड टू फॉलो विद। नंबर 1 इज मेंटोरशिप। सराउंड योरसेल्फ विद दोज विनर्स, टेक गाइडेंस, मेक मेंटोर्स, राइट मेंटोर बनाओ, किसी से बैत कर लो जो कि वाकई में तुम्हें सही डायरेक्शन में गाइड करे। आई मीन समवन लाइक मे बी आई डोंट नो वसीम अकरम फॉर एग्जांपल, इफ इमरान खान इज अराउंड, मे बी इमरान खान, राइट? हाँ, people उसको like बोला that. दियारा जेल चले जाए, दाल पकाना शुरू कर दे। You never know, निकल आए ना अडियाला से बाहर। तो लेकिन फारिग हो वहाँ you know, पर, तो कहीं मिलने जा सकते हैं ना, विजिटर्स मिलने अलाउड चले है। जाए, या absolutely. जब But वसीम अकरम जब अपनी स्प्रिंटिंग कर रहे हो तो but वसीम भाई अब थकते देखो नहीं है, उसको यही बोल दे उसको। तो ये बड़ा जरूरी है कि भाई यू नीड टू हैव द राइट मेंटर्स, एंड नॉट नेसेसरली पाकिस्तान से, आउटसाइड पाकिस्तान, बिकॉज़ इफ ही इज प्लेइंग अराउंड द लीग्स एंड एवरीवन, राइट? अब तो सर ये खेल विवियन रहे हैं, इनके रिचर्ड्स पास और व्हाटएवर। एक्सपोजर है यार, या बाय द इनके वे पास मुस्तफा, बिल्कुल, वेस्ट इंडीज वाली जाते हैं कैरेबियन मुस्तफा, जाके खेलते हैं। आपकी बात यस on paper it seems pretty. I don't think so there is a mentor left in Pakistan to be a mentor right now. I don't think so there is anyone. I don't think so. हाँ वसीम अकरम को वैसे अगर मैं आप बोलो ना बताऊं, कि आप आओ, वसीम जो बोलता है कि मैं मेरे जैसा आपको कॉन्ट्रैक्ट साइन बताऊं, करो, मैं आ जाऊंगा, राइट? यार मैं आपको जी, बात बताऊं। वैसे भी आप एक काम करें, वो ए स्पोर्ट्स पे कौन सा शो कर रहे थे, ये भी क्या पवेलियन नाम था उसका, बड़ा पवेलियन पॉपुलर भी पवेलियन। हुआ है। अच्छा हाँ, इट्स वेरी पॉपुलर इन इंडिया एंड एवरीवेयर एल्स। मुझे पता है, अब सिर्फ एक माइंडसेट अगर आपने जज करना है ना, लाइक हाउ प्रोफेशनल दे आर, राइट? यू नो देयर इज टू डिफरेंट थिंग्स, राइट? हाउ गिफ्टेड दे वर वर्सेस हाउ प्रोफेशनल एंड व्हाट देयर माइंडसेट इज। आप सिर्फ इनकी बातें सुने हाँ और दुनिया का कोई भी और क्रिकेटिंग शो उठा के देख लें जहाँ पे क्रिकेटर्स बैठ के डिस्कशन कर रहे हैं, कोई इस तरह की बातें करता है जो जो ये कर रैप रहे मार रहे हैं या हैं। जुत्ते मार रहे हैं। जुक जुक हाँ जुकते मार रहे हैं, ठीक है, इनके मजाक देखें आप, ठीक है, देयर ऑल हाँ, कैरेक्टर्स, ठीक है, मस्ती नहीं रोकनी चाहिए। देयर नॉट प्रोफेशनल no, प्रोफेशनल्स, it is not a ठीक sports है, center discussion. इट It's इज हाँ not. नॉट, इट इज नॉट। हाँ It is like बकचोदियां this देखें आप, podcast that we are बातें, having right now. It's ये भी ज्यादा ये भी सीरियस वैसे लेवल पे सब हो रहा है, मैं है। आपको बताऊं। हाँ, ये भी सही, ये भी सही The है, सही only है। अब the बातें only लिटरली person, जुकते मार रहे हैं यार, मिसबाह Misbah, मिसबाह Misbah, the only मिसबाह person who's मिसबा। good. By the way, he's coming in 2 weeks here again. हाँ आ रहा है, 28 को तो आ रहे हो, अरे आ बता रहे रहा था बुला रहे हैं ना आप? साहिर भाई के हाँ, पास आऊंगा तो मैं। अबे यार शिट, मैं नहीं होऊंगा। कब तक है? फ्रॉम टिल so he's व्हेन? going to be coming. 20th No, June? no. साहिर So भाई, he's coming साहिर भाई रोक लेना, घर पे रोक 9. लेना उसको। वो जनवरी में आ नहीं रहा नहीं है। नहीं, दिसंबर में आ रहा है। 9 दिसंबर को तो मेरे का भी डिनर कर दिसंबर, रहा है। अच्छा अच्छा 9 9 दिसंबर। दिसंबर में, फिर तो यार सही है। मैं बता दूंगा तो आप आ बता रहे हैं देना यार। मुस्तफा भाई, मिल रहे हैं वहाँ अगर पे? अगर अगर साहिर भाई इनवाइट करें तो भाई। श्योर उससे मिलने का इस बार तो पूरा वो है। कर लें यार, ही इज अ नाइस गाय। वेरी नाइस गाय। हाँ बाय नाइस द मैं वे, गाय। आई मीन अच्छा बंदा है अच्छा वो। मैं ये आपको बताऊं, और ये डिफरेंस होता है एक बंदे में। अच्छा मिसबा, बाय द वे, टैलेंट अगर आप उसको टैलेंट के स्केल पे मेजर करें अगेंस्ट इंजी और मोहम्मद यूसुफ और जोनस। यूनस, he's probably rated the lowest in terms of talent, but how did he make it to be the best captain or one of the best captains in Test द cricket? ब्रेन्स। टेस्ट क्रिकेट It's या all that mindset and that work ethic, यस fitness पे focus, बाकी सारी चीजों पे focus and all of that, right? फिटनेस पे उसका So बहुत बड़ा फोकस। this is what an ordinary person can do if you're, यस, you know, so consistent and so professional and so good, right? एब्सोल्युटली। वरना आप उसके बरक्स देखो, उसका यानी कि बिल्कुल एक डिफरेंट स्पेक्ट्रम में ऑन द हायर एंड ऑफ टैलेंट वाज मोहम्मद आसिफ, बट ही हाँ, वेस्टेड हिमसेल्फ मतलब बिकॉज़ ही बट तुम वाजंट इवन अगर तुम लेकिन डिसिप्लिन्ड इनफ। बैट्समैन को कंपेयर करो, लाइक इंजी फॉर एग्जांपल, राइट? आई मीन आई एम श्योर इंजी भाई वुड बी नो डिफरेंट देन वसीम भाई और वकार भाई और मुशी, you know, the kind of the way they talk and all of that stuff. So sure, like zero focus on fitness and मस्तियां भी चलती होंगी, सब कुछ चलता होगा, ठीक है, टोटल टैलेंट पे खेल गया ना, टोटल टैलेंट पे खेल टोटल गया टैलेंट में basically, है ठीक है। यार। 90s वालों बच्चों को तो बिल्कुल दूर दूर होना we चाहिए, should क्योंकि वो discount एक them from our एनोमली discussion थी। here. Yeah, exactly. वो एनोमली थी पाकिस्तान की हिस्ट्री में, जिस तरह की यार जो अभी नहीं, ये मैं इंडिया। पता डिसएग्री क्यों करता हूँ, यू हैव टू इवॉल्व विद टाइम, बिकॉज़ देखो ना, शास्त्री एक्चुअली वाज द कोच ऑफ दिस इंडियन टीम
अब देखो कैसे चौड़े में कैसे आता है, उससे कोई पूछे तुम अपने क्रिकेटिंग रिकॉर्ड के बारे में बात करो ना, तुम उसका टोटल चौड़पन क्या है, वो तो कहता है मैं तो इस टीम का कोच था। कोच रह चुका हूँ, हाँ, ये ठीक है, मुझसे अब मैंने तो सिखाया उसे। दैट इज हिज क्लेम टू फेम नाउ। यस, कोई दैट्स उससे ट्रू। पूछे तो भाई तू तू अपना बताना, जब तुझे पाकिस्तानी सूतते थे तब तू बताना, तब भी तू इतने चौड़े में आता था ऊपर से। नहीं तो, और ये भी कोई पूछ ले कि आपका जो इसकी टीम की जो इतनी बड़ी ग्रोथ है, आपका इनपुट एग्जैक्टली क्या था, कि आपने क्या चीज थी जो आपने डाली हुई, आप पॉइंट कर सकते हैं यार ये वाला, ये मैंने बनाया है। पता नहीं, बट आई एम कुछ श्योर तो पता नहीं, कुछ होगा। होगा, कुछ तो होगा। पता नहीं, कुछ तो होगा, पता नहीं, समथिंग। मॉडर्न कोच है, he's लेकिन one of the modern coaches, right? हाँ, लेकिन उसका ये भी कहा जाता है कि बेसिकली ही वाज विराट कोहली यस मैन, और विराट कोहली वाज बेसिकली बाईपासिंग एवरीथिंग दैट ही नीडेड, दैट्स व्हाई ही हैड टू लीव। Bro, if that works, then Then why not? I mean that's हाँ, fine. एग्जैक्टली, When you That's fine. become that तभी powerful, then विराट you कोहली have की, to, you know, go around certain things, and you have to do it, right? So it is what it is. आई नो, व्हिच इज व्हाई विराट कोहली और द्रविड की नहीं बनी, क्योंकि द्रविड वाज अ डिफरेंट पर्सन। द्रविड वाज लाइक, मैं अपने हिसाब से लेके चलूंगा, आई विल बी द मेन Dravid गाय। is very professional. हाँ. बट अगेन, वाज इट द्रविड commentating in the World Cup final? No, 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 No. I That's heard not him. part of the. I heard him. no, 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 no. नहीं. नहीं, द्रविड कोच है ना, वो क्यों Yeah, I know, but I heard him. I was like, what the fuck Maybe is they he might have doing? called him Like, for I a was like, few minutes to talk. हाँ, That ये could be हो सकता है। possible, but I don't think so. ऐसे मैं कोचिंग वही सोच स्टाफ रहा को था, बुलाते नहीं है इतने शायद. चौड़े अब में इतने चल रहे हैं। confidently कह रहा है कि उसको बुलाया, तो हम हो सकता है कि ये, but he was not in the commentary panel. नहीं, he was not on the panel. मैं कह रहा हूँ वर्ल्ड कप फाइनल में उसने कमेंटेट किया था नहीं। I don't think the I coaching don't think staff so. is allowed to come to the commentary panel unless somebody invites them I as a don't think guest so. during हाँ. a 5-minute discussion. वो ये presenter बाउंड्री ने लाइन लाके पे बुला बुला लिया। ले तो हाँ, बुला ले. exactly, I don't boundary think वो line कॉम बॉक्स में तो नहीं बुलाएंगे मेरे ख्याल से. हाँ, ओके, that was maybe मैंने Must have किसी been और को somebody सुना But होगा। else. anyhow, I mean, yeah, I mean, at the end of the day, our issue is, thinking outside the box, making ourselves a brand, coming up and thinking analytically, strategically, वो हमारे इस टीम में नहीं है, ठीक है। और रहा सवाल ऑस्ट्रेलिया के जाने का, अब वहां पर हम सबको पता है कि ऑस्ट्रेलिया में हमारा दिमाग बन के जाएगा कि वहां फेंटी पड़नी है हमें, ठीक है। ये तो तैयार है ना, अब यानी कि अब नाउ यू दिस शुड आपको इस चीज को आपको पाकिस्तान टीम को शुड फील लाइक कि हम कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, जस्ट रिलैक्स। आपको 2003 के वर्ल्ड कप के बाद पाकिस्तान की ऑस्ट्रेलिया के साथ टेस्ट सीरीज याद है जिसमें हसन रजा खेला था? अच्छा, वो ऑलमोस्ट हसन रजा नहीं, हसन यार रजा वो हसन रजा ने कम फैसल इकबाल वाली। फैसल इकबाल भी होगा पर मुझे याद नहीं है, बट 2003 के बाद एको वो जो शारजा में, एको हो रहा है किसी शारजा का। नहीं पता नहीं, मुस्तफा पता नहीं क्या मुस्तफा धड़धड़ दर कर रहा है कर अपना। टाइप कर मुस्तफा हिला रहा है कुछ. टाइप कर रहा था। नहीं, टाइप कर, स्क्रीन की बात कर रहा हूँ. पेज 2 पे जा रहा था मुस्तफा। तो वो आपको याद है वो टेस्ट सीरीज से बहुत ही कोई बुरा हाल हुआ था उसमें पाकिस्तान का. मुझे लग रहा है ये ऑलमोस्ट उसी तरह की होगी, नंगा करके और you मारेंगे never हमें. know, we might ये तो win one ओनली, of the games. और वार्नर का फाइनल सीरीज है जो कि हमारा सबसे 36 का आंकड़ा जिस इंसान से है ना, वार्नर का। वो मतलब 36 का आंकड़ा यही है ना कि डबल सेंचुरी मारेगा या ट्रिपल अब ये सेंचुरी मारेगा. हाँ, यही है. अब ये है कि वो अपना करियर पूरा कहेगा कि यार मैं आराम से पूरा बना के जाऊंगा नंबर्स अपने, क्योंकि अब उसका लास्ट सीरीज है, ये लास्ट होम सीरीज है उसकी। हाँ. ओ, एक और ट्रिपल सेंचुरी आ रही है भाई. यार आप देखें उनकी टीम में मल्टीपल वर्ल्ड कप विनर्स हैं यार, अनबिलीवेबल। स्मिथ हैज वन इट ट्वाइस, नाउ आई थिंक पैट कमिंस था पिछले वर्ल्ड कप में, हाँ, पिछले में तो 2015 में, 15 में था I don't या नहीं think so. था? I don't think so. Stark था Stark maybe, होगा। I don't know, but these guys are like multiple World Cup winners, insane. एक Zampa, टाइम पे पॉन्टिंग के highest, तो तीन थे ना एक साथ. हाँ पॉन्टिंग तो खैर वो तो फ्रीक टीम थी ना उसकी। Zampa is the, I think he finished 23 wickets, second highest in the tournament, और like most by a spinner in World Cup history. I think उसने मुरलीधरन का उसका रिकॉर्ड तो तोड़ मुझे दिया। समझ भी नहीं आता, समझ नहीं मतलब आया, कितना समझ नहीं जमीन आसमान का फर्क है, कहाँ मुरलीधरन और कहाँ यार। आप मतलब मुझे तो ये समझ में नहीं आया कि मिडिल ऑफ द कब टूर्नामेंट आपको लिया याद है, उसने विकेट. मुझे लगता है उसने पीछे जाके ना शीट में नंबर चेंज कर दिए अपने, पता लिटरली नहीं वो कि वाला नहीं, सीन. वो छोड़ो, मुझे तो आपको याद होगा मिडिल ऑफ द टूर्नामेंट जब हम लोग कुत्ते की तरह पिट रहे थे एक दूसरे, हर बॉलर पिट रहा था, वो उसमें मैंने वो देखा नंबर 3 पे शाइन चल रहा था, 18-19 विकेट्स ले चुका था तब तक। तो मैं कहा भाई कहाँ विकेट लिए इसने, कौन उसने सी ले ली? 5 ले ली थी ना ऑस्ट्रेलिया वाली, तो वो हाँ काफी लेकिन एड अप कर गई थी. लेकिन और वो, उधर शामी है, वो 3 फाइवर्स ले चुका है वो, फिर भी
हाँ वो पीछे से वो भी 18 पे था। लेकिन शामी तो की मैं बात कहता हूँ सुनो ये यार, बेचारा उस बंदे ने शुरू के 3-4 मैचेस खेले भी नहीं, फिर भी टॉप विकेट परफॉर्म बना. खेले भी नहीं. हाँ. He he should have should have been the been the man of man the of the series. series by the way. Yeah. He should have been the man of the series. मैं तो बोला था. he was I like think his performance. It's true that Virat Kohli was also 200 runs ahead of the second best batsman in the tournament, but I mean, I think India I made mean it Virat this Kohli far just had also. Virat Kohli had a very Virat Kohli like very Sachin But he Tendulkar made series. three centuries. Yeah. I It's know, not a but he joke. like Virat Kohli was known for the 186 in Hobart against Sri Lanka. Those Australian games. These like big तो innings. वो ऊपर वाले आउट ही नहीं होते उसके, तो उसकी गलती थोड़ी है. नहीं वो तो खैर है, हर मैच खेला ऑलमोस्ट उसने क्योंकि वो रोहित शर्मा तो कट लेता था ना लेकिन मारामारी करके. इनका वो भी तो चेंज हो गया ना स्टाइल. अब ये आते हैं, मारते हैं, कूटते हैं, तो ऑब्वियसली उसमें विकेट भी चली जाती है. हाँ लेकिन उसकी लाइक अच्छी सीरीज थी, ऑब्वियसली नंबर्स बहुत बुरे नहीं है उसके, बहुत अच्छे नंबर्स हैं उसके. बहुत लेकिन आई अच्छे. थॉट के इम्पैक्ट अगर देखा जाए तो शामी का है. शामी का शामी का देखो ना, इम्पैक्ट. ये भी तो आप देखो ना कि किसने ग्राउंड ब्रेकिंग परफॉर्मेंस की है. आई मीन 3 हाँ फाइवर्स लेना, 3 सेंचुरीज आई एम श्योर किसी ने मारी होंगी पहले, इसी ने मारी होंगी. अबे ठीक है. डिकॉक ने 4 मार दी हाँ इसी वर्ल्ड कप में. मतलब, लेकिन एक वर्ल्ड कप में 3 फाइवर्स किसने लिए, मतलब और इस तरह से लाइक 80 रनों पे टीम को आउट करना, ये वो टीम तो में आउट करना. इट्स नॉट अ जोक. इट्स नॉट अ जोक. देखो तो ना इससे थ्रेट परसेप्शन कितना बिल्ड होता है, ये भी तो देखो ना. बट दिस वाज द लास्ट वर्ल्ड कप. किसका? ये इंडियन टीम का. हाँ. यानी कि आई थिंक शामी वोंट प्ले द नेक्स्ट वन. आई एम श्योर विराट शामी यार परहैप्स. अभी वेरी सून ही विल बिकम इररिलेवेंट. वो जिस एज में है ना अभी, ठीक है, उसने जो कर लिया 1 आध 2 साल में. आई मीन यार अभी हम लोग याद है कि जब वो 10 विकेटों से हमारा आया था, उसके बाद शामी को कितनी गालियां पड़ी थी. कितना मारा था यार उसको रिजवान ने. नहीं उसके बाद शामी को कितनी हाँ. गालियां पड़ी थी इंडियन फैंस से, हाँ, यानी कि ही वाज पाकिस्तान द चले मोस्ट जाओ हिट. और ये कर लो और वो कर नहीं लो. आप खुद सोचें कि कितनी जल्दी परसेप्शन चेंज होता है कि नाउ ही इज लाइक द एप्पल ऑफ एवरीवनस आई इन इंडिया. हाँ, दैट तो वैसे शुड बी इन इंडियन फैंस फेस, राइट? के मतलब अब किस बात के चौड़े हो रहे हो, मतलब तुम लोग यार सोचो तुम लोगों ने. आई थिंक इट्स अ फेलियर. और ये मैंने बाय द वे निखिल से किसी की बात हुई है, निखिल की मेरी कोई अच्छी बात हुई थ्रू आउट द वर्ल्ड कप. मे बी शायद वो जिंक्स नहीं करना चाह रहा होगा. और नहीं, अब मेरी तो होती रही है, मेरी होती रही है. तो मैं उसको क्या नाम है, मुझे टाइम नहीं मिला और उसका भी मैसेज नहीं आया. तो वो आई वंडर how he rates, how an Indian would rate like this whole generation. It's kind of like the English football generation, just made sorry David Beckham, Paul Scholes, Steven Gerrard log aaye and they did fuck all on in international stage. They won individual trophies and all with their clubs. इसी तरीके से इस इंडियन टीम ने आपको जो ना टूर्स जीत के दिखाए हैं ऑस्ट्रेलिया में, या इधर उधर मैचेस जीत गए, ये वो फाइनल पहुंच गए. बट विल दे बी रिमेंबर्ड फॉर लाइक द सिल्वरवेयर? I don't think so. And I think it's a wasted opportunity. It's a massive wasted opportunity. और कोई कमी भी नहीं है. कोई कमी अगर आप कहना है, जैसे हम लोग चैलेंजेस की बात करें अपनी टीमों की, यार उनके पास स्ट्रक्चर नहीं है, ये नहीं है. Everything. They have every fucking thing. उनके हर नल्ले प्लेयर के पास पूरा एक entourage मौजूद है of analytics, of fitness, of क्या कहते हैं कंडीशनर्स. आपको एक डाइट्रेशन दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है. वो सब उनके पास मौजूद है. आई डोंट थिंक कि और किसी के पास मौजूद है. I agree, ऐसे ही है. अच्छा, ये मैं स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ जो लास्ट पाकिस्तान एंड ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज थी. जस्ट टू रीकैप अ फ्यू थिंग्स. 2 मैचेस हुए, वी लॉस्ट बाय एन इनिंग्स एंड सम रन्स. सो इफ यू लुक एट द फर्स्ट वन, इसमें वी जस्ट कम डाउन. अच्छा, इसमें शान मसूद ने 27 की. अजहर अली, he's gone obviously, he was the captain. असद शफीक फीका है भाई, also फीके को लेकर आओ वापस. शफीक फीका जो है ना, बस एक बात बताऊं, मैं आज से मैं अगर फर्क रिमेम्बर्स, मैंने कहा था कि आज से 4-5 साल पहले आई थिंक ये साहिर भाई मेरा और एक था आपका कि फीका शुड हैव बीन द कैप्टन ऑफ म्यूचुअल कंक्लूजन था कि फीका जो है ना उसकी. Yep. And actually, he actually जी असद शफीक उसने एक्चुअली 2 सेशंस कैप्टन किए थे, जिसके बाद आई रिमेंबर मैंने और साहिर भाई we talked about it, and which as we know is a perfect perfectly sane enough number of sessions to be considered as a captain. What it was, I mean, you could see the talent once आंख से होती. चलो भाई मैं एंड करता हूँ मैं इसको.
नहीं बंद नहीं कर, मुस्तफा रुक जा, इसको वो करने दे, रिकॉर्डिंग बंद कर, हाँ रुक रिकॉर्डिंग जा बंद करें सर, मुस्तफा, एक रुक जा। सेकंड।